Okay, so good morning everyone. Myself Ruchika Rathi. So I'll be your trainer for SQL and Power BI starting from today. Okay, so anybody can quickly confirm, are they able to see my screen? I am just highlighting a simple notepad here. Please confirm and then we can start with the session. Yes, Ruchika. Yes, okay, thank you so much. Now, I just wanted to have one more check. How many people should we expect in a session? Like 20 to 25? Is there anyone who is yet to join from among your friends? Yes, Ruchika, Everybody we can start the session now. can start. Everybody is there. Okay, Yeah. fine. Yeah, okay, fine. So yes, so we'll be starting with SQL Server, all the basics and couple of advanced functions of SQL we will be covering starting from today. Then slowly, steadily, we will be moving to Power BI. Okay, so when we start with Power BI, it is more about visualization than getting the data, whatever data we are preparing as a part of your SQL Server. So now, before I move into actual SQL Server, please let me know maybe in the chat box how many of you have installed the SQL Server, or it's like even if it is not there, we can do it parallelly in the session today. Okay, just help me understand in the chat box. People who have Power BI, let's say Power BI and SQL Server both. Even if you have only one installed, not a problem. Okay, no for Abhishek. Okay, so it's almost, yes, Rita, please go ahead. You have raised your hand. No, I've installed both actually. That's why. Okay, good, good. That's good. Yes, anybody else who have installed it? Okay, so maximum of you have not installed it. Okay, then my next question comes is, people who have installed it, is it that you all have started working on SQL, you all have the knowledge, or it's like just you all have installed and kept it as a prerequisite? I've used it to an extent. You have used it? Okay. Now Very others, basic. okay, others help me understand how many of you are aware of SQL. I'm just asking because then I can understand the roadmap. How should I go? Should I start with the very basic SQL, or should I take you like maybe the from directly from the concepts? Because we want everybody should be on the same platform. It might be repetition for a couple of people who already have the SQL, or people who already have a basic knowledge of SQL. So it can be a repetition for them. But then I need to understand like what is the comfortable level. Start from basics. Okay, we'll do it. Okay, okay, fine, fine. So maximum are saying let's start with basic. So let's go ahead. Okay, so okay, yeah, no problem. I'm taking your comments as we should go from very basics. Okay, got it, got it. Yeah, we should start from the initial phase because revision is always better. Yes, yes, definitely. So now what I'm doing is now I have an understanding like everybody is fresher to SQL, and from there we are going to start it. Okay, so let me just start it. Let's make it a very intuitive session. It is not like that only I am teaching and you are acting as a listener, as a learner. Let's make it a very interactive session so that it's not a boardroom for any one of you. Okay, so you are going to be with me for next 28 to 30 hours. Okay, so that is why any issues you have, any concept you're not very clear, feel free to unmute your mic and stop me, because it might happen in the session I'm not able to keep switching between the chat sections. I might miss that. So anywhere, anybody have any question, any basic query, just raise, I mean, rather raising a hand, you can just unmute and let me know. Okay, so that we can cover it once again. Now, starting with SQL. Okay, now what do you mean by SQL? So SQL, the full form is structured query language. Also, I will request every one of you keep your notepad ready, or Excel, or your, let's say, paper and pencil. Okay, because I recommend this making a notes parallelly with me, so that let's say after a month or after a week when you're trying to do a revision, it should not be a case again आप वापस जा रहे हो YouTube पे same चीज के concepts पढ़ रहे हो. Do not let this happen. Okay, so keep a notepad and everything, whatever is comfortable with you, handy. I always prefer using a notepad or an Excel sheet. Okay, so that even you people will understand what concepts are covered and what is remaining. Okay, and everybody please go on mute. There are few mics I can see like which are on mute. Okay, thank you so much. Now starting with the first session, what is SQL? So the full form is of SQL is structured query language. Somebody's on unmute, please help me by going on mute. Okay, so this is the full form of the
SQL. Now, before understanding SQL, we should understand where did SQL evolve, why SQL is known as the hottest language along with your Power BI, Tableau and ClickView. Why? Okay, that we will understand. Now, data is everywhere in the universe. So first thing, coming to data, because we have data, that is why we have SQL. So data is everywhere in the universe. So if I give you one simple example, let's talk about maybe a manufacturing company. So what happens in a manufacturing company? Let's say this company is working on a paper and let's say pencil, scale, erasers, whatever is related to manufacturing, they are designing. So here we are taking an example of manufacturing company. So what is happening? Let's say I am the owner of this company and there is one consultant, there's a small consultancy or let's say small business who have approached me, that is to my manufacturing company, and they are asking me to design, let's say 1000 pencils of a Camlin company. Okay, this is one requirement, 1000 pencil of a particular brand. So somebody is saying anything? Please be on mute, everybody. Yes. So Ma'am. I am running a manufacturing company. Ma'am. I am manufacturing pencils, rubbers, scales, and books. So now what is happening? Ma'am. There are different small businesses. There are different small consulting firms. They are coming and approaching me. So one have approached me to design 1000 pencils. Other have approached me to design, let's say, 500 erasers. Okay. So this is my requirement for 500 erasers. Then there is one more firm who have approached me to let's provide maybe 1000 of scales. Okay, so this is what happening to my manufacturing company. I am owning this company and there are different consultancy who are coming and approaching me to design something for them. So what is happening? They are coming with requirement and I am noting down this requirement. So when you are noting down this requirement, what is happening? You are saving the data. Okay, what I'm doing, I am just storing this data. Okay, because I should remember who have approached me. Let's say client number 1 have approached me for 1000 pencils, client number 2 have approached me for 500 erasers, and client number 3 have approached me for 1000 scales. So I cannot remember this on a day-to-day basis because my business is growing and people are approaching me. So what I am going to do is I am going to form a database where I'm going to store all this requirement. Okay, give me a second. People are putting in the chats. Your voice cracking, ma'am. Okay. Let me know if I'm clear now. Am I audible now? No, it was audible previously, maybe because of some. No, it was clear only. For clear? Okay, no worries. So It can be an individual network issue. Yeah. I'll repeat it, no problem. Okay, so I was just saying very simple example. See, before understanding what is SQL Server, it is very important for each one of you understand what is a data and what is a databases, because this is the place where your SQL will be acting as a mediator. Okay, so I was just giving an example of a manufacturing company. Let's take an example of Amazon. Everybody know Amazon. Everybody is doing shopping on an e-commerce website in our day-to-day life, right? Because they want to buy something, they want to purchase something. Okay, so first example was for manufacturing company. Let's say now we are going to Amazon. It is an e-commerce website. Let's say Amazon, Flipkart, any of the websites which you are very friendly with. So what happens there? If there are, I think, 25 people in the meeting today. Each one of you is buying something or other thing on a daily basis. Some have purchased laptops, some have purchased, let's say, football, iPhone, college bags, and so on. Now, each one of us, out of 25 people, what is happening? Out of those 25 people, let me write it here so that you can be on the same scale what I'm trying to explain. So there are 25 people in the meeting. So out of 25 people, there are some 10 people who have requested for return. So what has happened? They have requested for a return. Now, what happens is if you have requested return for a laptop, somebody else might have requested return for a shirt. Okay, so in this process, everybody have requested for a return of something, and every return will have a reason. Okay, every return will come with a reason, so that the company, the e-commerce website owner will get to know, the partners will get to know why have you returned the order. Right now, when you are returning, before even returning, when you're ordering something, what happens? Everybody will have an order ID. Each of the candidate will have a unique order ID,
and that is the reason when you are returning something, the person will come to your place and collect it within the duration, within the span of time. If I have purchased a laptop, I want to return it. Maybe it is not functionally good, I did not like the feature configuration, something like that. So what happens, he is definitely coming to my place, he is not coming to your place. Okay, you have ordered a laptop and you want to return it. No, you have ordered a t-shirt, he will come to your place and pick up the t-shirt only. Why? Because they are maintaining everything in a very structured format. That is one thing, that is known as databases. Second thing, every ID, or let's say every person, every customer have its own unique ID. Because of that, they can maintain who have purchased what, in what region, in what area, and what is the product. Now, to maintain all this, to make their efforts very streamlined, what happens, they need to store it somewhere, and that process of storing is known as data warehousing and databases. Are we clear till here? Shall we move to databases now? Yes, Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Now let's understand how is this data stored and how these e-commerce websites and companies get to know who have ordered what, and from that scenario they can understand. Let's say Amazon is working into Pune, Bangalore, let's say different parts of the world, not only India, different parts of the world as a globe. So now with the help of your data and with the help of your Power BI reports, Tableau reports, ClickView reports, they can understand which area they are doing very good, which area they need to improve it. Okay, so with the help of your SQL databases and with the help of your reporting tools, you can give them a proper framework where they will be able to decide that. And that is why these technologies are so much into boon, because they give you a very symmetrical information, a very symmetrical, very intuitive dashboard where the business people can come and decide for their future. Okay, today we are doing 1 million. 1 million is my total turnover for the year. How can we improve and make it 1.25, 1.5? So what technologies are helping them? Your SQL server and your reporting tools. Reporting tools can be many. We are not going to stick to Power BI. So when we start with Power BI, I will be giving you knowledge for Tableau, for ClickView, ClickSense. Okay. Now going to databases. So what is a database? Okay, let me frame the question this way. What is a database? Now everybody have a fair understanding till now, like whatever we are ordering, let's say from a website, from a company, from a local store, what happens is they keep on maintaining. So if I take you to the traditional environment means, let's say 10 years back, if you're going in India, let's talk about India. What happens is, if you're going to a pharmacist, to a medical shop, and you have ordered for a crocin medicine, what happens, the moment you are purchasing a 10 strip for crocin, or let's say a 10 strip for any other medicine, what the person in the medical used to do earlier, फटाक से वो अपना क्या करता है, नोटपैड निकालता है, नोटबुक में मेंशन करता है, ओके इस पर्सन ने, मे बी ही इज नॉट राइटिंग योर नेम, ही इज नॉट आस्किंग फॉर योर नेम, बट व्हाट इज ही डूइंग, ही इज मेंटेनिंग पॉइंट नंबर 10, सीरियल नंबर 10, क्रोसिन 10 स्ट्रिप्स मेरी जा चुकी है with a date. So what he is doing earlier, everything was also maintained. पहले भी ये चीजें maintain हुआ करती थी, but the efforts were very manual. Now just because we have so many databases available in the market, this is being done in a very structural format. Okay, now coming to databases, what is a database? It is a collection of data. Okay, first thing, it is what? Collection of data. अभी क्या हो रहा है, वो मेडिकल शॉप में आप गए थे 10 साल पहले, उसने क्या किया, मेंशन किया, रुचिका came to purchase 10 medicines. There is somebody whose name Rahul, he came to get a bottle of Sinaris. So what is he doing? He is maintaining everything in the form of a data and with a date. So when you're working with databases, date is very important. अगर आप pharmacist में जाते हो, उसको कुछ medicines मांग रहे हो, he is just maintaining, there is no date. So will he have an overview कि किस दिन पे मेरे क्रोसिन के 10 samples या 10 strips जा चुके थे, तो मेरे पास अभी बैकएंड में कितना क्रोसिन का मेडिसिन पड़ा हुआ है, how much I need to order more. Yes, so date is very important when you're working with databases. Now databases is nothing but collection of data, first thing. Second thing, it holds this data in the form of tables. अभी ये तो आपको पता चल गया कि डेटाबेसेस क्या होता है, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा, बट वो डेटा को कैसे होल्ड करता है, इट होल्ड्स द डेटा, होल्ड्स दिस डेटा in the form of tables. Okay, everybody knows tables. अभी tables में क्या होता है, can anybody tell me how can we put the data in the tables? कैसे स्टोर करते डेटा टेबल्स में? Yeah, rows and columns. Very good, rows and columns. So your answer would be
rows plus columns. Okay, again going to that pharmacist, वो जो अंकल बैठे वहां पे मेडिकल में, वो क्या करते हैं, वो अपने नोटबुक में फॉर्म कर रहे हैं, right? He's just doing a manual effort. Now the efforts have been optimized. What are the efforts? We are creating a proper table. In that table we will be adding a rows and column. Similarly, if I take you to the concept of Power BI, Tableau, ClickView, these three tools are known as a data visualization tools. Okay, so whenever I say data visualization, that means I am referring to your Power BI, I am referring to Tableau. Okay, sorry, the spelling is, and we are referring to ClickView. So the latest version of ClickView in the market is ClickSense. Okay, so whenever I say data visualization, that means we are referring to only these 4 tools. Now, why only these 4 tools? There might be somebody in the meeting who might say, okay, I know there are more data visualization tools. There are Cognos, MicroStrategy, Crystal Reports. Okay, I agree. These are also the tools, but those are traditional tools. Again, when we talk about data visualization tools, the latest tool in the market, which are very much in boom, they are Power BI, Tableau, ClickView, and ClickSense. So all of these 4 together, if you frame all of them together, they are known as the advanced BI tool. So the full form of BI is business intelligence. Okay, so whenever I refer to advanced BI tool, so by default you should understand I'm referring to these 4 tools. Whenever I say data visualization, again that means I'm referring to these 4 latest tools. Okay, now just because we are talking about traditional tools in the market, let me just put those name as well here. So traditional tools, technologies, one and the same. So we have Crystal Reports, then we have Cognos, okay, then we have business objects. I started my career with business objects, okay, then we have MicroStrategies, strategies. So these are all the traditional tools. Okay, there are companies who are still working with this tool, but then just because Power BI and remaining BI tools, advanced BI tools, are providing you some better functionality, some advanced technologies, that is why like few of the companies are still not preferring to go with the traditional tools. Okay, now again coming back to databases, somebody have told me very correctly that data is stored in the form of rows and columns when we work with table. So next question is, what is a table? Okay, so what it does, table holds the data in the form of rows plus columns. So when we say rows and columns, if I take you to the advanced tools, how is the data stored there? Again, the data is stored in the reporting in the form of rows and columns. So what is the different name there? We call them in the form of dimensions and measures. Dimension plus measures. Okay, so we also have the data available into your Power BI, into your Tableau. Okay, all these tools we will be having the data, but how the data is segregated there, or you can say how the data is divided there, it is divided in the form of dimensions and measures. Okay, so we won't go into the details of dimensions and measures for now. Just keep it in mind that in the BI tools we have the data storage format and the dimensions and measures. Now this holding of data is similar to Excel. So let's say if I go to Excel here, okay, let me just remove this unwanted area. Now what is happening here, if I insert something, I am going to insert table in Excel, or let's say let me just prepare an Excel here. I have employee ID, then I have employee, let's say department, okay, and then we have employee joining details, rather saying joining details. Give me a second, I'm just preparing a sample data. Employee, okay, we have let's not make it ID, let's make it employee details. Then we have employees under specific department. And we can have employee, let's say accounts. Okay,
Okay, under employee details, what will we have? We'll have name, his age, his salary. Then we will have, after salary, we can have his date of birth. We can have date of joining. Okay, let's keep it clear. Department, he can be into HR department. He can be into finance department. Then he can be into the sales department. Then he can be into, let's say, the banking section. Okay, he can be into operational section, and let's make it one more, the development section, where you and me follows. Okay, we will be under this section. Account, they can have account with HDFC. Okay, they can have account with Axis, they can have with Citi. Okay, so particular company, they always work with one account, but then yes, if you are already a employee, prior employee, you can like also continue with your older accounts. Okay, now this is what, how data is stored in your databases. At the same time, we can store the data in your Excel also, so the format remains same. So looking at this sample data, what we can say, in your databases also, it is similar to storing your data. That is, it is similar to storing the data as your Excel. So other name for Excel is spreadsheet. Okay, so in IT terms, we always call it as spreadsheet. I mean, there are very less people who call it Excel. Either we call it Microsoft Excel or spreadsheet. And also we call Excel with this extensions. The extension would be XLS. Okay, so whenever you're dealing with your technical terminologies, you will listen people saying in the office, please send your data with the help of spreadsheet, or please send an attachment for Excel. So that means they are referring to the Excel. Now, coming back to databases. Now, just because we know that the databases will be holding the data in the form of table, and the table will be divided in the form of rows and columns. So we as a developer, what all we can do with the databases? So we can provide the storage, we can store the data in the databases, we can retrieve the data from the databases. So what we can do in databases, what we can do, we can store the data, we can retrieve the data. Okay, we can update the data, we can modify the data, and most importantly, we can delete and we can drop the data. So these are different ways of how we can deal with the data in databases. Now, the databases also provide us the capability to access and manipulate this data. That is what I'm trying to say here. We can access, that is, we can store, we can retrieve, we can update, we can modify, we can delete, and we can drop. So ultimately, if I tell this, if I join all these keywords in a technical terminology, so the statement would be, in databases, it provides us, it gives us the ability to access the data, and it also gives us the ability to manipulate with the databases. So manipulation means you're updating, you're modifying, you're deleting. Are we clear till here? Shall we move to the next section of databases? Any questions? Any questions? No. Okay. Now let's understand what type of databases we have in our market. Okay. Now everybody knows, tomorrow if I'm coming and asking in the session, what are databases? What is the full form of SQL? How is the data stored in the databases? I think everybody should be able to answer me. Now, if somebody is coming and questioning you, what are the types of databases we have in the market? Okay. So I'm just putting them here. Types of databases. Start making notes. We are going in a very basic format. Okay, so this will be easy for you when you're applying for interviews, or let's say when you're going for self preparation. Okay, yes. Now, what are databases, or you can say types of databases? So we have two types of databases. One is your relational DB. So now when I say DB, that means I'm referring to databases. And second is your NoSQL. Okay, people who are making notes, I'm just giving you a minute, you can note it down, then we shall move ahead. Okay, so there are two types of databases we mainly deal with. Okay, one is relational database, second is your NoSQL DB. That means your databases. Now let's try to understand each one of them individually.
So relational database is nothing but arranging your data in the form of rows and column. Okay, so that is what I'm going to write it here, rows and columns arrangement. That is what happens in your relation databases. Okay, that is first point. Now when I say in a relationship relational databases, the data is arranged in the form of rows and columns, that also gives me a second pointer here. So the second pointer here is that these tables will have a relationship between them, because the name of the database is relational databases. So that means the tables will have relation between them. Okay, we'll see an example. So we are going to do all of this practically hands-on. We are going to do just before starting hands-on. It is always important to make you understand the theoretical part, because may not be 100%, you might not get everything in the first go, but when we do it practically, it will be like 100% fixed, like what are we doing. Okay, so let's bear with little bit of theory, then we will be moving to practical session. Okay, again coming to relational databases, they are stored in the form of rows and columns, and this table will have a relationship between them. So let's say if I go back to my Excel, so we have created a small table here. I can name this table as employee database. Okay, so what is happening here, we have three tables, that is employee details, employee department, and the employee accounts. It can keep on adding. Okay, for just a basic example, I've taken three tables. Now let's say you being a SQL developer, or let's say you being a Power BI developer, or let's say you being a data analyst, your requirement is on a Tableau report or on a Power BI report, you want to showcase all those employees who fall under the finance department. So what will you show? You will show the employee name. Okay, you will pick up an employee name, you will pick up the department, and the department would be equal to finance. Let's say finance you're showing, or let's say if you're showing all the employees, they are falling into HR department. So what is my requirement? I want to show, or I want to list all those employees who fall under the finance department. That is my first requirement. Second requirement, I want to see the names of those employees who have recently joined. So I want to get the date of joining, and amongst those I want to understand what is their level. So level means whether they are freshers, whether they are experienced, or whether they are belonging to the same company, something like that. I want to get this kind of a data out of my databases, and same thing I want to highlight on my report. Okay, so now what is happening here, if we see the first scenario, I want employee name and the department should be finance. Okay, so if there is something related to employee details, definitely I can pick up an employee name from here. Okay, but now what is happening, the second requirement is I want to specify the department is finance. So until unless I don't have a relationship between these two tables, I won't be able to retrieve data from here. That is why once we build a relationship between the tables, we will be able to get the data from all the tables which are formed under the relationship. So if this is not, मतलब ये आपका सिर्फ काम नहीं है कि आपने टेबल बना दिया, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर दिया, है ना. अभी एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, अकाउंट टेबल है, ठीक है, हमको किसी ने काम दिया, हमने डेटा को स्टोर कर दिया. अभी नेक्स्ट वर्क क्या होना चाहिए, बिकॉज हमको डेटा क्या है, तीनों टेबल से पुल करना है. So जब तीनों टेबल से डेटा पुल करना होता है, so what is the main requirement, you need to form a relationship between them. और वो relationship हम लोग कैसे form करते हैं, with the help of your cardinality. So we will be seeing this concept later on. I'm just noting it down. Cardinality we use, and with the help of that you can form a relationship between your databases, and there are different keys. So with the help of keys and with the help of cardinality, we can set a relationship between multiple tables. There is no restriction कि आपको 3 tables के बीच में ही relationship लगाना है या 10 tables के बीच में ही लगाना है. You can keep on adding, but then it is not a good practice to add all the tables together. हम उन्हीं tables को add करेंगे जिससे हमको data actually retrieve करना है, जिसका data हमको actually report के front end पे दिखाना है in the form of charts and dashboards. Okay, so my first requirement is employee name and finance. So definitely I need to link the employee details with the employee department table. Now my second scenario is I want the employee name, I want the date of joining.
So what is happening here? I have the name and the joining in the same table. So even if I do not have the relationship with this two table, I would be able to highlight the name and the date of joining of all those people. Let's say for the year, there should be a year. So let's say for the year 2020 and the people who are in the month of September. So let's say if I want to showcase something like this on my dashboard, people who have joined in the month of September 2020, their name and their date of joining. Definitely I can do. Some might have joined on 1st September, some might have joined on 2nd, 10, 20, 30, so on, because everything is falling under the same table. Now my condition is levels. So let's say under department, I'm adding one more point here, level. This is my level, for example, under the same section. So now if I want to get the level of each of the employees who have joined me in the month of September. So again, my scenario is I need to have a join between the employee table and the department table. Accordingly, once my relationship is set, I will be able to retrieve the data with both of this table. Okay, so this is how we will be making the joins. Okay, joins and cardinality. Okay, now this is about relationship databases. Now let's move to NoSQL databases. Okay, so what is a NoSQL databases? Let me just create more space here. Okay, so NoSQL databases is basically, it will have values, it will have something related to your graphs, and it will have most of your document. Yes. Yes, please go ahead. Yes, somebody speaking. Any issue, anybody, any help needed, any concern? Let me know. We can pause for a minute. Yes, please go ahead. Ruchika, this relation database they will call structural database. Yeah? Exactly. They'll call a structure. That is what my next point is going to be. Yes, we actually make it structure, Girish, just to highlight you more in this. Data is never structured. Data comes in three format. Okay, let's just because you have brought up this point, let me highlight it here. So data will be coming up into three formats. Okay, so three ways we get rather saying ways, three formats I can say. Okay, let me just increase the size here so that everybody can see what I'm typing in. Okay, so data comes in three formats. The very first format is unstructured. Then you have structured, and the last you have is semi-structured. Please start making notes. Okay, so this is the three ways we get the data. Okay, so this is not only related to your IT world, not only related to a manufacturing world, it is a global distribution. Okay, so we get the data in the form of unstructured, which is completely structured, completely non-structured, structured and semi-structured. Now if I want to looking at the current scenario, current era where we are, if you want me to take it forward, like if somebody wants to understand कि मैम percentage क्या होता है, आप क्या बोल सकते हो क्या कि unstructured data कितना होता है, structured कितना आता है. Okay, so I'll just mention it here. Unstructured is 80%. Okay, structured is your 10%, and definitely remaining 10 आपका यहाँ जा रहा है. Now somebody would say ठीक है आपने segregate तो कर दिया, percent भी दे दिया. Can you tell us कि कौन से तरीकों से unstructured data आ रहा है, कौन से मीडिया से structured data आ रहा है? So very basic example here is your Facebook, Twitter, and it can be like the list is on and on and on. Okay, so okay, structured is like, I won't give the examples here because this is like many, but just because everybody is familiar to Facebook and Twitter. अभी किसी को question होगा कि unstructured data कैसे बोल रहे हैं आप? How can you determine like unstructured data Facebook से आ रहा है? Not only Facebook, not only Twitter, your e-commerce websites also. Okay. Now what is happening here? If I say everybody has a Facebook account, many might have a Twitter account also. Let's say आपने Facebook पे 2 दिन से एक ही सर्च किया,
For example, somebody is very interested to learn about your cookery shows. किसी को cooking का बहुत interest है. He or she wants to like understand. He wants to follow few of the very well-known cooks, very well-known chefs. So क्या हो रहा है? Since last 2-3 days, he is doing the same check. Maybe आप Google पे भी वही कर रहे हो, आपके Facebook account पे भी वही कर रहे हो. Let's say same day, on the second day, or let's say on the third day, आप जब फेसबुक पे जाते हो तो क्या होता है, आपको वही चीजें रिलेटेड होके दिखती है. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुकरी शो का ही इंफॉर्मेशन मिलेगा. यू विल गेट लॉट अदर इंफॉर्मेशन, बट वन आउट ऑफ दैट वन वुड बी योर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉप शेफ्स, टॉप कुकरी चैनल्स, टॉप कुकिंग चैनल्स. ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो एमएल बोलते हैं ना, एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस. इनकी वजह से क्या होता है ना, ऑल दिस एप्लीकेशंस, ऑल दिस सोशल मीडिया, दे कैप्चर व्हाट यू आर सर्चिंग, and next day when you're coming, let's say second day, third day, fourth day, they provide you those results which you want to see. ओके, सो ये जो डेटा है ये कैसे हो रहा है? एआई के बेसिस पे हो रहा है. इफ यू सी व्हाट्सएप आल्सो, एवरी 1 or 2 months they are updating themselves. Why are they updating? Because they want people to stick with that particular application. They don't want you to move to other applications. So they are improving your user experience, है ना? How they are improving? They are studying everything. वो स्टडी करते हैं, बेस्ड ऑन दैट दे इम्प्रूविंग इट. सो यहाँ पे भी वही होता है. सो व्हेनेवर यू गेट द डेटा विच इज मोस्टली ऑनलाइन, मोस्टली ई-कॉमर्स रिलेटेड, योर सोशल मीडिया रिलेटेड, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड. एंड जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट बीआई प्रोजेक्ट्स, सो आई नो कि डेटा 80% अनस्ट्रक्चर्ड होता है. एंड हाउ डू यू कन्वर्ट टू स्ट्रक्चर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा ना कि आपने पर्सन दिखा दिया, आपने मीडियाज दिखाया कि कहाँ से डेटा स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड आता है. देन हाउ डू वी कन्वर्ट टू स्ट्रक्चर? We have this databases. In that databases, when we insert the data with the help of multiple operations, multiple functionality which is provided by SQL Server, MySQL Server, what we do while inserting this data, we analyze the data, we study the data, and we convert. I mean, we try to convert. कभी-कभी data unstructured भी होता है, but we actually try to convert and manage this data and maintain this data in a structured query language. That is why the full form is SQL, structured query language. मतलब आपका डेटा क्या है? वो अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड को हमने क्लब करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यही डेटा आगे जाके आपके रिपोर्टिंग टूल्स में काम आएगा. क्लियर टिल हियर? आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट. इट इज लाइक किसी को टेंजेंट नहीं जा रहा है. एम आई क्लियर? Yes, Ruchika. Yes. Please repeat relationship databases. Okay, I'll do it for you. Okay, यहाँ तक क्लियर है ना? Okay, so any questions you have this way, please getting it on, because क्या होता है ना, this question से maybe I'll be able to tell you some more extra knowledge. Ultimately, we have a session where we are going to study structured, unstructured data, but like in case if you brought it up, I can like put on few more extra points. Okay, so somebody wants to understand what is your structured relationship database. Okay, so इसमें क्या होता है? मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया यहाँ पे. अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या, एक छोटा सा टेबल है. ये टेबल में मैंने क्या किया? डेटा को अरेंज किया. एवरीबडी यूजेस एक्सेल, हर कोई नोटपैड यूज करता है, हर कोई पावर पॉइंट यूज करता है, करेक्ट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को मेंटेन कर रहे हैं. अभी पहले क्या होता था, वो फार्मासिस्ट अंकल क्या कर रहे थे? बुक में मेंटेन कर रहे थे. मे बी उन्होंने वहां पे कॉलम बना के रखा होगा. ओके, इतना का इतना मेडिसिन गया है, इस बंदे ने ये चीज ऑर्डर किया है, बट आई डोंट हैव इन माय फार्मासिस्ट. ही विल गो एंड गेट इन टच विद द पार्टनर. सो अल्टीमेटली ही इज ट्राइंग टू ग्रो हिज बिजनेस. अभी कभी ऐसे भी हो जाता है, यू आर गोइंग टू द लेट्स से सुपर बाजार, समथिंग इज नॉट अवेलेबल. इमीडिएटली व्हाट विल द सेल्स पर्सन डू? ही विल मेक अ नोट. ओके मैडम, गिव मी योर नंबर, tomorrow I'll message you, you can come and collect it. तो वो क्या कर रहे हैं? He is not losing on the customers. First thing, he is giving you a proactiveness कि मैडम आप नंबर दे दो, I'll come and tell you. Tomorrow you will have the product available. But at the end, if you see how is he connecting you, he's maintaining. So that is why मैंने session शुरू होते से ही बोला था, data is everywhere. You just need to analyze the data, understand the data, and then convert that data into a structured format so that you can present that data in the form of your reports and dashboards. Okay, now coming to relationship means आपका data बहुत ही symmetrical तरीके से arrange करके रखा होता है rows and columns में, ठीक है? अब वो data को हम जो symmetrically arrange करते हैं वो वहां तक नहीं रुकता है. अगर मुझे डेटा एम्प्लॉय टेबल से निकालना है, डिपार्टमेंट से निकालना है, अकाउंट से निकालना है, तो अल्टीमेटली आई नीड टू हैव अ रिलेशनशिप, राइट? For example, let's say if you are, let's say who is there? Girish is there. Girish wants to talk to me. So what will he do? He have my number. But उनको क्या करना पड़ेगा? He have my number. He have his cell phone. What he needs to do? He needs to dial my number. He needs to connect with me.
So what is he doing? Girish is connecting with Ruchika with the help of my contact number. तो relationship बन गया ना. He is calling me with his phone. The phone is the mediator, and there's a link between both of us. Connection. So similarly, this happens here also. आपको हर tables के बीच में relationship लगाना पड़ता है. That relationship is known as cardinality. I'll tell you when we go ahead what is cardinality, relationship कैसे लगाते हैं, and what are keys. Okay. So who have asked for relationship, repeat. Are you clear now? These three formats come in. So I'm not clear with the question. Which three formats? Yes, Ramsay, you can unmute yourself. Which three formats you're talking about? Okay, these three formats you mean? Yes, ma'am. Okay, so I didn't get your question. Actually, these Comes three in. formats are included in. Okay, they are a part of your data only. Okay, ma'am. Raw data basically. See, these Okay. are known as your raw data. Raw data बोलते हैं इसको, है ना? अभी raw data क्यों बोलेगा? जैसे देखो, pharmacist uncle क्या कर रहे हैं? नोटपैड में डेटा मेंटेन कर रहे हैं. I am the Amazon CEO. I am the CEO of Amazon. You are the CEO of Flipkart. ठीक है ना? बोलने में क्या हो रहा है? पकड़ लो. You are Flipkart का CEO. I am Amazon का CEO. और वो pharmacist uncle is sitting in his shop. वो अंकल क्या कर रहे हैं? नोटपैड में डेटा मेंटेन कर रहे हैं. आई मीन सॉरी, उनके नोटबुक में. यू फ्लिपकार्ट सीईओ, यू वांट एवरीथिंग टू बी वेरी वेल मेंटेन. आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली आप SQL सर्वर में डेटा मेंटेन कर रहे हो. आई एम मेंटेनिंग माय डेटा इनटू एक्सेल. तो क्या हो गया? हम तीनों के पास में डेटा है, हम तीनों के पास में कस्टमर्स आके हमारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं. ठीक है. नाउ द वे ऑफ मेंटेनिंग डेटा इज डिफरेंट. He is maintaining into his paper pencil work. I am doing into Excel. You are doing into your SQL server. So ये तीनों जो डेटा है ना, अलग अलग लेवल का, SQL सर्वर, Excel, आपका पेपर पेंसिल वर्क, ये तीनों तरह का डेटा किसके पास जाता है? कंपनीज के पास जाता है, जहाँ पे डेटा एनालिस्ट बैठे होते हैं. पीपल लाइक यू एंड मी. ओके, डेटा एनालिस्ट बोलो, ऑपरेशनल पीपल बोलो, डेवलपर्स बोलो, एनीथिंग सेम नेम एंड आई मीन डिफरेंट नेम्स, बट द वर्किंग इज सेम. Even when you guys look for Power BI jobs, do not search only for Power BI. I'll tell you how to search it. Data analyst भी वही काम करता है, ऑपरेशनल एनालिसिस भी वही काम करता है, बिजनेस एनालिस्ट भी वही काम करता है. So do not search limit your search only with Power BI. Okay, when you are searching with this parameters also, आपको Power BI या Tableau तो मिल ही जाएगा. Right now, even if you go to not medical, अगर आप जाते हो this what we say, I just forgot the example. हाँ, बैंक में अगर आप जाते हो, बैंक्स में भी पता है Power BI Tableau चलता है, because they want to understand कि what is the flow of the customers, किस दिन peak होता है, किस दिन कम होता है, something like that. So even you can apply in banks where they are looking for a finance operational analyst. So it is not that कि IT में ही आना है. I'm just telling you the ways. अगर आपका IT है में तो definitely you go there. But in case अगर कभी ऐसे होता है कि jobs नहीं मिल रहे हैं, I mean for some reason, okay, so there is also a way how do you update your resume, how do you present yourself in the social media, and how do you search the jobs. अगर ये तीनों चीजें सही नहीं है and then you feel मैंने कोर्स किया, still people are not connecting me, so you need to analyze these three things. आपका resume correct है, up to date है, सेकेंड थिंग आप प्रॉपरली जॉब सर्च कर रहे हो या नहीं, और थर्ड थिंग आर यू शोकेसिंग व्हाट यू आर डूइंग. सो आज के वर्ल्ड में वो आप जो कर रहे हो वो दिखाना बहुत जरूरी है. जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा आपने पावर बीआई सीखा है, they won't approach you. Okay, so now Just 1 minute. Samsung, please mute yourself. Yes, I request everybody, please mute yourself. Okay, let me see if I can do a force. Okay, thank you. Okay, Yes, thank you. yes. Sorry for the interruption. Yeah, no problem. Sorry Actually, for that, क्या होता है ना, I know everybody sitting at home, it's a Sunday morning, there can be disturbances, accepted. But because I might lose the flow, I might miss on some important point. So just make sure you are on mute. You're free to unmute if you have questions, you can type in, but just make sure the flow doesn't goes. Okay. हाँ, so this is how अलग-अलग formats Hello. में आपका data. Yes, who's there? Auditro ma'am. Ma'am, actually, I have a question. Okay. So basically, the unstructured format of the data when we receive it. Okay, suppose we receive it in Excel. I mean, majorly, I think we receive it in Excel format, or we can receive it in any other format. Okay. So if we suppose receive in Excel format, then if there are like in unstructured data, there is like duplicates and a lot of like calibration problems, then a lot of things. So which is the best practice, like cleaning the data
Excel itself and then importing it, I mean exporting it to SQL server, or directly we should actually know how to do all sorts of data filtering and cleaning in SQL itself, which is a best or Okay. which is the quickest way? Okay. First thing, a very good question. Now, second thing is, see, if I just give you two examples to help you understand. Ek mere paas, I have one Excel. One Excel is having like, let's say 1 lakh rows. Okay. I have one more Excel which is having like, I mean, 1 lakh rows means 1 lakh row ka data usme hai in the form of columns and tables. Okay. And then I have second Excel, it has like maybe 50,000. This is what the data I have. So when you're trying to check the duplicates for 50,000 row, ठीक है, आप फिर भी duplicates you can see, you can check the nulls, blank, you can do it, because ultimately that Excel is updated by human, so there can be human error, there can be duplicates, there can be null, there can be blank, सब चीज उसमें होगा. But when the data is increasing, it is not feasible for human eye to capture all that data. So when the data is less, you can do it into Excel, you can do it into Notepad. But when we have a huge data coming from the client, it is always a best practice to do it into your servers, your database servers, and SQL, Oracle, whatever servers you're dealing with, whatever database application you're dealing with, they provide you all these options user friendly. You can just put a duplicate, you can remove, you can delete, you can get a data very clean format before you take it to reporting. In case agar aise hota hai, agar aapne kya kiya, if you are like, no madam, I want to remove duplicates from Excel only before going into SQL, because I'm not a very advanced SQL person. Okay, let's go this way, remove some duplicates in Excel, still you have some duplicates and like repetitive values when you go to SQL server. So kya ho gaya aapke Excel mein, for example, if I go to a new tab here in my Excel, okay, I have some duplicates. So ये duplicates कितना हो गया, 50% था, आपने कुछ remove करके, you have removed it to maybe you have removed and you have made it like 30% clean. Sorry, you have made it to 30%, you have a better data here. Okay, now again, if you have taken that data, your Excel's data into your databases, ठीक है, so आपके पास में 30% जो clean था, आपने उसको और थोड़ा better clean कर दिया. Maybe now you have only 10% of duplicate, blank, null, unwanted columns. ऐसे आपके पास में 10% है. Now if you go to your reporting tools, rather saying Power BI, let me make it reporting tools. In this reporting tools also you have a way of removing the duplicates. So आपके पास जो धीरे धीरे duplicates हर platform से आ रहे हैं ना, Excel में 50% था, you remove 20, you have 30. You're carrying forward that 30 to your databases, and with the help of SQL query आपने वो 30 को 10 पे लाके छोड़ दिया, right? We usually don't make it 10. We always have a best practice कि maximum यहाँ पे remove ही हो जाए. Just for example, I'm saying 10% फिर भी रह जाता है, because again it's a human person who is going to handle that databases. Engineer people like us are going to handle it. 10% कुछ रह जाता है. So again you have the opportunity at your reporting tools to remove the remaining redundancy. तो आपको हर level पे you can remove your unwanted data, you can remove the unwanted columns, unwanted like fields, and you can make it structure. This actually depends. If I take you to the IT world, this will depend what level of data you have, what is the size of data. So if I tell you, if you want me to fix कि हम कहाँ ज्यादातर duplicates निकालेंगे, that will be your SQL. अगर कुछ रह जाता है, so you will be coming to your reporting tools. Clear till here? Yes, ma'am. Yes. Okay. Mainly in CSV format. Not necessary Nitesh कि CSV में हो. देखो मैंने अभी आपको example दिया. Pharmacist was doing into the notepad, right? I was doing into my Excel, and somebody who's the owner of this Amazon, he is doing into SQL server. So data can be coming from any format. It is your duty where, how do you want to store the data? I meant for I can show practicing the actually. मतलब practicing के लिए mainly हमें CSV format में मिल जाता है. Okay, that you're saying, correct. You get into CSV format. Okay, so taking my point ahead, you get the data into multiple formats. You have to decide कि आपको कौन से platform पे data set करके आगे move करना है. So talking about again your live projects in companies, you always go with your SQL server. Let's say it can be anything. Oracle भी हो सकता है. SQL mainly SQL, MySQL ये ज़्यादा चलते हैं, है ना? Because they are older tools. सबको उसका security पता है, data handling पता है. So we go with this tool. So usually we fix one tool. कितने भी sources आपके आने दो. I will be explaining you the architecture of databases also. There it will be more clear कि कैसे data आता है अलग-अलग sources से, and then you can maintain one source.
same source you're taking into your reporting tools. Okay, now let's move ahead and talk about your NoSQL databases. So NoSQL databases, it is like you have key values, you have graphs, you have documents, and so on. Now let's understand what are the different databases available in the market, just because now we are very much familiar with the differences between the two. So MySQL is the one. Then second one, yes, the very well-known SQL Server. The name is SQL Server Management Studio. That is the actual name. Then you have SQLite. Okay. Then next, next, PostgreSQL. Workbench. Sorry, please SQL pardon. Yes. Workbench. No, your voice is not clear. Tell me once again. SQL Workbench. Workbench. Okay, correct. So there's a list of many, but then I just put it down very few for people who are like completely new to this background, so they should know what are the tools. Okay, now here we have MongoDB. Okay, NoSQL. That is PostgreSQL, right? Not PostgreSQL. Yes. I've just written the short form here. Correct. Okay, then you have Cassandra. Then what you have as a part of NoSQL, you have HBase. Okay, so these are few points which I've listed. Anybody want to make a note? I can just wait. And At the end of the class, you can save this note and you can also share with us. okay, fine, no problem. There can be some spelling mistake because I'm mostly into I have a this cursive writing, so no problem. So if there's any spelling mistake, you can remove it. But then yes, I'll try to save it. Okay. Okay, just 2 minutes. You can check any points you want me to repeat, then we can go ahead. I think MySQL Workbench is together. MySQL Workbench. Yes. Are the name of relational database or tool? SQL Server. Please be louder. Means MySQL, SQL Server are the name of tools which are relational database. No, I am still not clear with your voice. Ma'am, these are tools in relation and no, correct. Yes, Farhan. I've just listed few. You can also Google search and have a quick check of what a relationship databases and then NoSQL. Okay. Yes, that was the only doubt. Okay. Yes. Okay. Ruchika, if I want to learn MongoDB, I need to learn it separately. Yeah. Yes, because I will be dealing with SQL Server. We have a very basic structure as a table of content for what we have designed for you people looking at the entire crowd, because people are some are from sales, some are from finance, some are completely non-technical. So I cannot pick up like any of the deep. I'm going with SQL Server because that is mainly used in IT. So that is why I've picked up that one. And just because we have a framework of very like simple, but then looking at the crowd, if people are able to grab advanced SQL also, I can like just extend a few of the concepts here. Okay, sounds good. Yeah. Ruchika, sorry to disturb you. Could No you please problem. elaborate MongoDB versus SQL? No, pardon me. MongoDB versus SQL what? SQL and Snowflake also. No. Come back. Snowflake. I can hear you saying 3 databases: Snowflake, MongoDB, and SQL. So how do you want to relate them? No. Actually, all these are same, or else there will be any difference. Okay. Good point. That is where I'm coming next. Yes, that is my next point. Okay. So clear till here, everybody. Let's move ahead. Okay. Others who are not speaking up, I understand. आपको सब चीज समझ रहा है. That is a good point. People are speaking up. That means there's something queries or issues you have. Okay. Going ahead now. It is totally new to me, so I'm learning peacefully, and MongoDB people are chattering, but it's totally surpassing me.
Okay. So good. Thank you for coming up and like saying you're new. So because even I get to know कि flow कैसे रखना है. It is not that कि जिसको पता है उसका revision होगा, जिसको नहीं पता है उनको भी हमको साथ में लेके चलना है. Correct? Because Power BI सबके लिए new होगा. So ultimately SQL भी it's like 50-50 what I can understand from the crowd. So अगर आप नहीं भी बोल रहे हो, it is good. आप notes बनाना शुरू करो. कहीं भी आपको लग रहा है you're not able to understand, feel free to stop me and we'll connect on that front. ठीक है. अभी purpose क्या होना चाहिए, सबको समझ रहा है. Tomorrow when we have a session, everybody should be on the same plate. People who are new, people who are already using, उन सबका level same ही होना चाहिए. ठीक है. That is the main aim here. Now coming to SQL, that is where we wanted to start, but then हम लोग यहाँ वहां से घूम के पूरा हमने हमारा fundamentals clear किया है. अभी SQL पे आते हैं. So what is SQL? Let's start with the full form. SQL is known as the structured query language. Earlier the name was SQL, SEQUEL. ऐसे भी पहले बोला करते थे, but now they have reframed it to SQL. The full form is structured query language. ठीक है, full form पता चल गया, इसका older नाम भी पता चल गया. Now the next question is why it is used, where it is used. So structured query language is used to query a relation databases. So I'm writing it here. Relational DB, that is relational DB is the place where your SQL is used to query. Okay, so basically कोई ऐसे भी define कर सकता है that databases or human. So let's say if I go back to my notepad, just because we are into online, I need to like keep switching between the notepad, PowerPoints, Excel. Okay, so this is my database. Okay, then I have, okay, give me a second, databases, then I have my SQL here, and then I have the user. So user can be, for example, you and me. So we are what? You are users here. So SQL will be acting as a mediator between the developer and the databases. So it will be helping us to query what we want to get. So now if I come to my sheet 1, so what I wanted the employee name and the department where he falls into. So who will be giving us this data? So SQL databases have all the details: employee name, employee department, employee accounts, employee age, everything is there under the databases, right? In the forms of tables and row. Now we as a user, we have a scenario, we want to retrieve something. So who is going to help us? SQL. तो अभी समझा SQL क्या act कर रहा है? It is acting as a communicator, mediator between your databases and the user. Okay, now moving to next point, we can query with the help of SQL in various formats. So we will be seeing all those formats one by one. Okay, now somebody was saying relationship database is structured. Yes, so now the answer here is relational databases are completely structured, and that is why we have a structured query language which will be acting as a mediator, and it will communicate between two. So user will be putting some questions. SQL is the mediator where we will be writing few syntaxes, and the databases is going to help you with the retrieval of the data. Okay, now let's move ahead in this topic. Okay. Can I Yes. ask a question? Yes, please. Ma'am, suppose in IT organizations, sometimes we also receive datas which could be encrypted in special characters, or so converting those into real time data. So is that possible in SQL Server? Okay, so you mean what is the format in what you're getting data in the encrypted and the second one? Encrypted, it is like coming in special characters, suppose on shipping date or something like that. So if it comes 29 and then hashtag question mark, so that can be sometimes that is also convertible. So in Excel we can convert that to totally date format, and correct. So it correct. So that SQL, sir, that's what I'm asking. Yes, SQL have its all way of converting the data. Yes, you can do so. That's why I said if you go to my notepad in the earlier stages, if I take you here, so see I've mentioned it here. Okay, let me close this bar. It is nothing but the higher versions of your Excel. I think I've mentioned a point somewhere. Excel, yes, see, it is similar to storing data in Excel, correct? But
SQL is databases is providing you better functionality, better security. The data handling capacity is way much huger than Excel. So if you go and search in your Excel, it has some limitation कि वो 10 लाख का ही data store कर सकता है, not more than that, correct? उसके बाद में वो crash हो जाएगा. But SQL Server have huge databases. हाँ, databases का भी अपना एक capacity होता है, but if you actually want to compare, it is a huge capacity. It has its own warehouses जहाँ पे अलग अलग डोमेन का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, फाइनेंस बोलो, सेल्स बोलो, एचआर, व्हाटएवर. सो यू कैन प्रिपेयर डिफरेंट स्कीमास अंडर योर डेटाबेसेस, और वो स्कीमास में आप अलग अलग क्या बोलते हैं आपके सेक्शंस डिफाइन कर सकते हो, सेल्स का सेक्शन, फाइनेंस का, एंड सो ऑन. सो SQL is capable of doing everything. Okay, now just answering your question in a better way. Now somebody might think कि अगर मैंने SQL server सीख लिया, so will I be able to work with Oracle? If you're getting a call from a company tomorrow, we want an Oracle developer with Tableau and Power BI as the front end skill set. So the question is, and so the answer is basically yes. You should be able to work with any databases if you have worked with SQL or Oracle. Now, अभी ऐसा क्यों? Because all of these databases have the same functionality, same work culture. सिर्फ आपके syntaxes में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, that's it, nothing else. So if you are mastering one of the databases, you should be able to understand remaining also. Same thing I can promise you if you are learning Power BI the way I recommend you. Okay, because we are actually making it a very user friendly, very basic to advanced we will be going. So if you follow what I'm saying, I can guarantee you in next 3 months you will be very good in Power BI and your SQL Server. Only requirement is you have to be consistent. आप consistent रहोगे, what I'm saying, you should be able to like start applying for job after 3 months. Okay, now again coming to your architecture. Yes, go ahead. Okay, go ahead. I am opening something. Till the time you can go ahead. Yes, tell me. मैम ये SQL के लिए ये भी सीखना पड़ेगा, MongoDB और कैसेंडर नो. अरे ये आपने तो क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका. देखो अभी क्या करना है, देखो अभी हम लोग सीख रहे हैं SQL सर्वर, है ना. और हम लोग क्या करते हैं ना, आईटी वर्ल्ड में रिलेशनल डेटाबेसेस पे ही काम होता है, नो SQL नहीं यूज करते. गुड, यू brought up that point. तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो. रिलेशनल डेटाबेसेस बहुत अलग है और नो SQL इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद नो SQL. हाँ, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम रेडी टू टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन देम. But because everybody is going towards marching towards your IT world, और let's say आप operations में जा रहे हो, कहीं भी आप apply करने वाले हो, जो भी आपका future plan है, so IT companies and other than IT, we always deal with relational databases because they are very advanced. उनके security बहुत अच्छा है, data handling capacity बहुत अच्छा है, retrieving is there, everything is there, right? And the table is, the data is stored in a very structured format, rows and columns के format में, जो हम properly read कर सकते हैं. So we never deal with NoSQL. हाँ, I'm not saying कि completely नहीं है. There are companies using it, but if you talk about the small scale and the large scale companies, we always go with relational databases. और इस relational databases से अगर आपने कोई भी एक technology उठा के पढ़ा, कोई भी databases, so that means you are studying remaining also. Same with Power BI. अगर आपने कोई भी एक tool पढ़ा, latest वाला, I'm not saying कि Cognos में या Crystal Repo जो traditional है, they are completely different. Okay, so अगर हमने Power BI Tableau पढ़ा, so you should be able to like learn bits and pieces of ClickView also. So that is why I'm picking up SQL Server. If you learn SQL Server, आपको MS SQL के भी syntaxes पढ़ते आएंगे, वहां पे भी आप query fire कर पाओगे. Same आप Oracle पे भी कर सकते हो और Postgres पे भी कर सकते हो. Are you clear now? Yes, sir. Yes, okay. So this is where we are going to go ahead. Okay, now what I'm looking here in this PPT, I'm just looking for architecture of data warehouse. Let me see if I have it handy. Otherwise, we can just do a Google search. So let me see if I have the architecture handy here. I had it somewhere, missed it. Okay, no worries. So now we'll go to the data warehouse architecture.
Okay. Let me see which would be a more promising platform, and then we can take it ahead. So all of the like structures similarly, anyone if you are picking up like समझ जाना चाहिए. So I'll pick up 2 screenshots so that if somebody is coming and telling me, मैडम आपने तो सेकंड नंबर का सिखाया था, मुझे तो कुछ और ही देखने मिल रहा है गूगल करते वक्त, तो let me pick up like 2-3 screenshots so that we can understand all 3 of them. So आर्किटेक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू क्वेश्चंस हमेशा होता है, आप जब भी जाते हो फ्रेशर लेवल पे बोलो या एक्सपीरियंस लेवल पे, अगर आपको प्रोसेस फ्लो ही नहीं पता है कि डेटा कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, कैसे रिपोर्टिंग में जा रहा है, सो एटलीस्ट फॉर मी एज ए इंटरव्यूअर आई विल बी लाइक वन पॉइंट आई विल बी रिड्यूसिंग कि आपने पूरा पावर बीआई सीख लिया, पूरा सीक्वेंस सीख लिया, बट यू डोंट नो हाउ इज द आर्किटेक्चर. So at least it is important. So I take interviews, my colleagues also take interviews, so we always have this question in mind: SQL architect, sorry, data warehousing and your database architectures. Okay, so give me a moment, I'm just seeing between this 3, 1, 2 and 3. Okay, so we can go with this. This looks fine. We can also go with this. Even this looks fine. And the third one is directly data mining. So let's start with this one. Where is the architecture? Copying this image. I'm getting this image into your Power BI, sorry, into your PPT, so that we don't get lost between the contents of that particular article. Okay. So here we have one structure. I'm just doing a new slide. Let me get one more data here. So, okay, this is fine. Okay, let's guess this one. Copying image, and I'm just pasting it here. Okay, I'm just doing it purposely so that ऐसा ना हो कि एक ही diagram पड़ा, बाकी के अलग-अलग लग रहे हैं. So no, everything is same. Okay, so I am just presenting this. Okay, now everybody knows databases क्या होता है, data कैसे अंदर आता है, and then we will be doing some massaging, we will be structuring the data. ये सब चीजें हमने देख लिया. Plus हमको ये भी पता चल गया कि हम लोग Microsoft SQL Server पढ़ने वाले हैं, उसका इंस्टॉलेशन भी देखने वाले. अभी वो सब चीजें देखने के पहले फंडामेंटल्स, आई ऑलवेज फोकस ऑन फंडामेंटल्स एंड आई रिक्वेस्ट नॉट ओनली फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस पीपल, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, एडवांस आप खुद सीख सकते हो. नोबडी कैन होल्ड योर हैंड. सिमिलरली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन आईटी, लेट्स से 1 year 2 year 3 years, अगर आपने 3 साल काम कर लिया ना एक या दो प्रोजेक्ट पे, nobody can like stop you to learn more, switch your job or whatever is your career plan. So first 3 years in a IT company is very important. You need to learn more because आपके पास as a fresher ज्यादा pressure नहीं होता है, आपको सिर्फ लोगों को देख के improve करना है. That is one thing. Second thing, when you're taking a training, let's say if you're doing your self training or whatever you're preferring, not only Power BI, any other tools, Python जाके कल कोई सीख रहा है, कोई जाके data science सीख रहा है, machine learning, always make sure your fundamentals are clear. Base, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, right? There are so many constructions which keeps happening in Pune or any other metro cities. What is the main aim of the engineer, civil engineer? Base strong होना चाहिए. अगर आपका concrete strong है, the building won't fall for next 15-20 years. अगर हमने उसमें advanced चीजें डालते भी गए उस building में, it is a plan of 21 story. If you want to plan maybe more 20, more 10, more 6, आप उसमें जो भी है आपके flows, you can do it. Why? Because your base is clear. So that is why we will be starting with the data warehousing architecture. Now, what is happening here? Let's look at a 3-tier. अब ये 3-tier architecture क्यों है? I'll help you understand कि people will tell you in interview, okay,
can you just reframe and like explain me the 2-tier architecture of data warehousing? So you might get confused. Okay, so confusion का कोई जरूरत नहीं है. Data warehousing का architecture 2-tier में भी होता है, 3-tier में भी होता है. That is why if you go to my slide here, मैंने एक 2-tier architecture लिया है और एक 3-tier लिया है. तो 2-tier means क्या होता है? ये जो ETL दिख रहा है आपको, ETL external sources, this is your 1-tier and this is your 2nd-tier. Now making it again easy, people who are not understanding कि tier क्या बोल रहे हैं. Tier means stages. This is stage 1, this is stage 2. So this is known as a 2-tier or 2-stage architecture of your data warehousing. Now coming to this platform, this is known as your 3-tier or 3 stages architecture. Okay, so we always follow a 3-tier architecture. So if anybody is questioning you, आप अगर interviews के लिए जाते हो, certification exams के लिए जाते हो, so the answer should be 3-tier architecture. Now understanding one by one. So this is my first level. कौन सा first level है? So operational, what I can do is I can just get insert, I can maybe get some shapes here so that we can actually bifurcate that where am I referring. So this is my 1-tier. Okay, I am just increasing the size here and okay, this looks good. Okay, I can just make a black marker and again I'm doing a copy paste here and this is my 3rd-tier. ओके तो ये क्या हो गया 3 tiers में आपका आर्किटेक्चर को मैंने ब्रेक कर दिया. Okay, now talking about the very first tier, very first stage, operational systems. So if you go into companies, let's take my current company where I'm working. So मेरे कंपनी में क्या होता है, एक ऑपरेशनल सिस्टम है. नॉट ओनली माय कंपनी, हर कंपनी में ऐसे होता है, बट आई एम टेकिंग एग्जांपल. सो इन माय कंपनी एक ऑपरेशनल सिस्टम है. वो ऑपरेशनल सिस्टम को डिवाइड करते हैं 2 सेक्शन में, ऑपरेशनल एंड सेकंड विल बी योर एक्सटर्नल. So I'll keep writing it here. Okay, so let's forget about this. Now let's go into operational systems, and then second you have external systems. Okay, ये हमारा first part हो गया. ठीक है. So अभी what I'm trying to help you understand under operational systems, what happens is every company will have its own databases. तो इन दोनों का क्लब करके क्या होता है, एक डेटाबेस बनाया जाएगा आपके कंपनी में. ओके, एक को नाम देंगे ऑपरेशनल, एक को नाम देंगे एक्सटर्नल. सो ऑपरेशनल मींस व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का लेते हैं, मेरे कंपनी का बात करते हैं. तो उसमें क्या होता है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. उनका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल है आईफोन. ठीक है, अभी वो आईफोन क्या किया, माय कंपनी इज द पैरेंट कंपनी टू आईफोन. उन्होंने आईफोन डिजाइन किया, जो भी सीरीज है S1 S2 डिजाइन करके दे हैव लॉन्च्ड इन द मार्केट. अब वो जब लॉन्च हो चुका है मेरे कंपनी से, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कीपिंग आई कि पुणे में वो प्रोडक्ट कितना चल रहा है, अदर पार्ट्स ऑफ लाइक जो भी पेरिफेरी है पुणे में वहां पे कितना चल रहा है, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हाउ इज माय आईफोन डूइंग एंड व्हाट सीरीज इज गिविंग मी मोर प्रॉफिट एंड इन व्हाट पर्टिकुलर सीरीज आई नीड टू डू मोर मार्केटिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया आईफोन का, मैंने इसका मार्केटिंग किया एंड आई स्टार्टेड going to different delivery person, I mean different partners which we have. Okay, so this is what operational related जो भी मैंने चीजें मैन्युफैक्चर की है, it will come and reside under this section operational systems. Okay, now अभी जब मैंने आईफोन लॉन्च किया है S1 S2 का, कोई तो मीटिंग में बोलेगा ऑलरेडी ये प्रोडक्ट तो मार्केट में ही है, द सेम प्रोडक्ट इज देयर, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन आई एम लॉन्चिंग माय ओन product, which that will come in under operational systems, when I have the same product already available in the market. So what my company is doing, I am just trying to understand कि वो product market में कैसे कर रहा है. That can be one thing. Second thing, I want to understand और अभी latest trend market में क्या चल रहा है. So under operational system, I have everything information related to my company's data, my company's product. Okay. Second, external means वही product जो market में है, just like my product, वो कैसे चल रहा है. उसके अलावा भी जैसे अभी एक ही फोन थोड़ी है, you have iPhone और जो भी है Samsung, whatever you have, Vodafone जो भी है, ये phones भी market में they are how they are working. So in my company's databases, I am maintaining data in 2 format, operational and external. Are you clear till here? यहाँ तक समझा what I'm trying to say? ये आपके हो गए 2 sources जहाँ पे आपका databases कंपनी का स्टोर कर रहा है डेटा को. ओके,
So that is one thing. Now, once you have the data in your databases, next चीज क्या होगा? You will be going to the second stage. Under the second stage, what will happen? Your cleaning and transaction would happen. That process is known as ETL. So somebody who have questioned me, encrypted format data आता है, CSV format में आता है. So can we do it into SQL? Yes, this is the answer here. You can clean the data. I cannot say 100% clean. Yes, but 95 to 98% आपका data आप clean कर सकते हो. Whatever is remaining, you can take it as a byproduct to your reporting tools and you can do it there also. So जैसे ही आपके पास में companies में जो data form होना शुरू हो जाता है, what is the second process you do? You take that data under your staging area. So this is your staging area where you will be doing different transformations with the data. So you are cleaning the data, है ना? अब ये cleaning में अलग-अलग bifurcations है. You are removing duplicates. You are removing duplicates, redundancy. Okay, you are removing null. Okay, I'll tell you the difference between null and blank क्या होता है जब हम actually Power BI में जाएंगे. Okay, null, blank और क्या कैसे डेटा होता है? डुप्लीकेट होता है, redundant होता है, null होता है, blank होता है, unwanted data जो हमको चाहिए ही नहीं फिर भी लोड हो गया है. Okay, so these are basic examples of how you can work with the data and make your data a very clean data. Okay, so that is one stage of your ETL. So staging area में क्या method follow किया जाता है? ETL. ETL means extract, transform and load. I'll just write the full form for people who are completely new. Extract, transform and load. Okay, so now let me just help you explain extract. अभी extract means क्या हो रहा है? ये जो डेटा हमारे पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस डेटा को हम यहाँ से उठा के इस चैनल में लेके आएंगे. दैट इज फ्रॉम स्टेज नंबर 1 यू आर गेटिंग योर डेटा हियर. अब ये स्टेज नंबर 1 पे डेटा कैसे आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? It can be anything. It can be your Excel. आपके sources. It can be your Excel. It can be your CSV. It can be, let's say, कोई और सर्वर से भी आप डेटा ले सकते हो. For example, Oracle में डेटा है. You can get it from there. Or it can be, let's say, maybe your flat files. है ना? आपके पास flat files है. Okay, so these are all different sources from where you're getting the data, and this data you are converting into one platform. So this is, let's say, my SQL Server का platform है. So I have the data here. So in second staging area, what we are doing, this is acting as your extract. मतलब ये अलग-अलग आपके data sources है. This is my data sources. इन sources से आप क्या करने वाले हो? इन sources से आप data को यहाँ पे लेके आ रहे हैं. उस source के बाद में आप उस पे transformation कर रहे हो. So cleaning area or staging area is mainly going to help you to transform the data. So let me make it little bit clear here. यहाँ पे आप data extract कर रहे हो. Okay. यहाँ पे आप डेटा क्या कर रहे हो? ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. सो ट्रांसफॉर्म एक्चुअली मींस यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द डेटा, यू आर ट्राइंग टू मेक द डेटा स्ट्रक्चर्ड. ओके, एंड इफ आई कीप द लोड हियर, फिर आप उसको जो भी आपका सोर्स है, मतलब जो भी आपका कनेक्टिंग रिपोर्टिंग टूल है, आप वो डेटा को लोड कर सकते हो. So you are extracting the data from different sources to your databases. You are transforming the data and then you are loading the data. Now let's go back. ETL के साथ में क्या होता है इसके अंदर? हम वो डेटा पहले कहाँ लेके आएंगे? डेटा warehouses में. So this is your data warehouse. Okay, data warehouse. Let's say, okay, data warehouse, database. Okay, so this is the main part here. ये आपका main, this is the heart of your complete what we say the architecture. Okay, so अभी इस database में क्या होता है? You have data जो आप अलग-अलग platform में segregate करते हो. So here you have the data in the form of metadata. ठीक है, I'll explain you all of them. Okay, इसमें अलग-अलग divergence है. Metadata, then you have data lakes. Okay, then third you have data miners and data marts. Yes, very important. So you have your data in the form of data marts. Okay, let me see more. Okay, and analytical applications. Fine. Analytical applications. Okay. Now, what is happening here basically? अभी क्या हो रहा है ना?
अभी डेटाबेस में आपका पूरा डेटा, ये जो भी डेटा है ये आके लोड कहाँ पे होने वाले आपके डेटा वे हाउस में, है ना। तो इस डेटा वे हाउस में आप जब डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाते हो तो वो डेटा पे आप क्या कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, अनवांटेड डेटा रिमूव कर रहे हो। अगर आपके पास सपोज डेटा 1 लाख रोज का है, क्लाइंट इज सेइंग नो, आप उसमें डेट का फिल्टर लगा दो। 1 लाख में भी अभी क्या डेटा 10 साल पुराना है फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब क्लाइंट इज सेइंग नो नो नो, यू ऐड अ फिल्टर, आई जस्ट वांट टू सी द डेटा इन द रिपोर्ट ओनली फॉर लास्ट 2 months। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस डेटा में फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हो। somebody have already told it, filter, है ना। now why filter, because a data warehouse is a place जहाँ पे आप historical data store कर सकते हो, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, and so on। that is why your databases are also known as the historical location, जहाँ पे आपका डेटा आप स्टोर करते जा सकते हो। यू कैन रिट्राइव द ओल्डर डेटा ऑल्सो फॉर योर रिपोर्टिंग पर्पज। Okay, clear till here? Now, so data warehouse can also be known as a place where you have the historical data, older data. That doesn't mean कि current data नहीं रहे, current तो होने वाला है ना, because I am running a Amazon website, e-commerce website, people are coming and I mean buying something day to day, कुछ ना कुछ तो उसमें retrieval हो ही रहा है। लैपटॉप्स परचेस कर रहे हैं, शू, रैक्स, बेड्स, एनीथिंग दे आर परचेसिंग इट। तो क्या हो रहा है, कल जिसने जो बाय किया था वो हिस्टोरिकल मोड में चला गया, आज जो कस्टमर्स है वो करंट कस्टमर्स है। सो इट इज नथिंग बट योर कॉम्बिनेशन ऑफ योर हिस्टोरिकल हिस्ट्री, इज राइट, इजी, हिस्ट्री प्लस करंट और लाइव यू कैन से। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अभी द वे आई सेड, डेटा वेयर हाउस इज द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो अभी क्या होता है, डेटा वेयर हाउसिंग इज सो ह्यूज, अगर किसी को वो डेटा रिट्राइव करना है, सो हु इज गोइंग टू बी द ईयर, इस एंड पे कौन रहने वाला है, यूजर्स एंड क्लाइंट्स एंड डेवलपर्स। इस एंड जो थर्ड टियर है हमारा, यहाँ पे कौन काम करता है, these are nothing but the developers, है ना। अभी डेवलपर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे डेटा वेयर हाउसिंग में जाके सीक्वल का क्वेरी फायर करे। यू अंडरस्टैंडिंग, ये जो भी हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर पे हम लोग सीक्वल क्वेरीज फायर करके डेटा रिट्राइव करने वाले हैं। सो अभी यूजर्स के पास इतना टाइम तो नहीं है कि डेटाबेस में डेटा सेल्स का भी हो सकता है, फाइनेंस का है, मार्केटिंग है, व्हाटएवर डोमेन यू फील, फार्मा, medical, all the data is there. But what is your project about? My project is about, for example, let's say sales। सेल्स का आपको रिपोर्ट बना रहे हो, आई मीन बिकॉज ई कॉमर्स आपका अमेजॉन सेल्स में डील कर रहा है ना, कस्टमर्स आर कमिंग, दे आर बाइंग समथिंग, दे आर रिटर्निंग समथिंग एंड द कंपनी इज अर्निंग कुछ प्रॉफिट्स। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, आई विल ओनली फोकस टू माय सेल्स वाला डेटाबेस, व्हाई विल आई गो टू फाइनेंस, मुझे एक्सेस भी नहीं होगा कंपनी में। सो व्हाटएवर डेटा वेयर हाउस यू वांट टू रिट्राइव, आपको उसी ड्राइव का एक्सेस मिलता है ऑफिस में। यू डोंट गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द डेटाबेसेस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियल होता है डेटा, सो आपको हर चीज का एक्सेस नहीं मिलता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिट्राइव फ्रॉम वॉट एवर डेटाबेसेस, वही आपको एक्सेस मिलेगा। नाउ दैट इज वाई यू हैव दिस डेटा वेयर हाउस बीइंग डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। सो इफ यू गो एंड सर्च ऑनलाइन, आपको ऐसे 4 या 5 सेक्शन नहीं मिलेंगे। आई जस्ट मेड इट लाइक वेरी क्लियर। सो आपको मेटा डेटा यू कैन रीड, डेटा लेक्स यू कैन रीड, डेटा माइनर्स, सो दीज आर लाइक मोर हैपनिंग्स। इन चीजों के तीनों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, but then I just divided it into a very basic level. So data, metadata means what? It is the knowledge about data about data. So the definition is data of a data. तो इसमें क्या हो रहा है metadata में, आप तो क्वेरी डेटा वे हाउस पे ही कर रहे हो, बट अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के सोसाइटी में एंटर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, सो दैट सोसाइटी इज नथिंग बट योर डेटा वे हाउस। ओके, अभी गेट पे सिक्योरिटी बैठा होता है, अभी तो बहुत सारे कंपनी, नॉट कंपनी सॉरी, सोसाइटीज में क्या होता है, माई गेट का ऐप चलता है। So if you're visiting that, you need to put a code. Okay, I'm visiting this flat number. I'm visiting my friend. I've come as a guest. Something like that. तो क्या हो रहा है, you are not directly going and accessing all the 10 buildings. अब एक सोसाइटी जो है XYZ is the society. You have 10 buildings A, B, C, D, है ना। तो आपको पूरे 10 buildings का एक्सेस मिल रहा है क्या? You will only get the access of building A, flat number 101, floor number 1. Because of what? Because your friend is residing there and you have given the access by the security to only visit that person and go and meet whatever you want to do, है ना। So उसी को हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा, डेटा ऑफ अ डेटा। तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मेटा डेटा देगा, तो आपको डायरेक्टली डेटाबेस के हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको BCD बिल्डिंग में जाने का जरूरत ही नहीं है। यू आर डायरेक्टली कमिंग टू मेटा डेटा, यू आर मीटिंग योर फ्रेंड, यू आर going back home. So metadata is a collection of your data. Now data lake is like one step ahead of data warehousing. So you can, I can put it here like one step ahead of
one step ahead of, sorry, one step ahead of data warehouse. So DB means data warehouse. That means data lakes में क्या होता है? Data lakes will have the semi-structured data, unstructured data, and fully structured data. Okay, as the name says, lakes, है ना? तो lake means वहाँ पे हर तरह का पानी आता है ना? Water can be from your ocean, from your ponds, from your lakes, from your rivers. तो यहाँ पे data हर तरह के format में है. So data lake is again known as a larger picture of your data warehousing. Okay, so this is nothing like one distribution of your data warehouse. Now data miners is like, again आपका data is mostly like bits and pieces में वहाँ पे cover करके रखा जाएगा, उसको बोलते हैं data miners in small pieces. Now coming to important part, data marts. Data marts means it will be storing your data with respect to subject. तो यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट रिलेटेड डेटा, यू कैन से सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा. सो लेट्स से, जैसे मैंने बताया था, किसी का सेल्स का डेटा है, कोई अगर सपोज मार्केटिंग में काम कर रहा है, किसी का प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल में है, सो यू डोंट नीड टू क्वेरी योर एंटायर डेटाबेसेस. आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली डेटा मार्ट्स के पास में आओगे, आप उनको बोलोगे आई वांट टू क्वेरी द डेटा फॉर सेल्स. आई मीन वी विल बी राइटिंग अ क्वेरी इन दिस फॉर्मेट. Okay, everything will go in the format of SQL. So data marts will help you to get the faster retrieval of your data with respect to the subject. So data marts are basically subject oriented application which will help you to retrieve your data. And the last one is analytical applications. So whenever you are storing the data, आप analytical applications के लिए भी data store कर सकते हो. उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग डेटा, रिपोर्टिंग टेबल्स. सो आपको जैसे टेबल आपके रिपोर्टिंग टूल्स में चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप वैसे भी डेटाबेस में यू कैन स्टोर द डेटा. सो वंस यू हैव द डेटा हियर, तो क्या हो रहा है? आप डायरेक्टली डेटा वेयर हाउस पे क्वेरी नहीं कर रहे हो. यू हैव डिफरेंट सेग्रीगेशंस, ये उसके डिफरेंट स्टेजेस है. अकॉर्डिंगली यू विल बी फायरिंग योर क्वेरी एंड देन यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट. तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. नाउ अभी ये सब, यस यस मैम डाटा लेक्स यहाँ पे है जो मतलब कि उसमें कुछ मतलब कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सब मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑलवेज. ओके आई अंडरस्टैंड. बट जब डाटा मैट को हम आएंगे, वहां पे क्या होगा कि सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर होगा, मार्केटिंग का पूरा स्ट्रक्चर होगा, ऑपरेशन का पूरा स्ट्रक्चर. करेक्ट. तो वहां से भी कुछ प्रोसेस होता है क्या, जिससे कि इसी डाटा लेक से डाटा मैट तक आने के लिए कि प्रोसेस होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर हो जाए पूरा डाटा. आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि डाटा पूरा स्ट्रक्चर है, वही वाला कुछ है कि उसके बीच में कुछ होता है क्या प्रोसेस, या फिर वो पूरा का पूरा ऐसा चलता है? देखो, मुझे थोड़ा लास्ट लाइन थोड़ा टेंजेंट गया. तुम बोल रहे हो कि जैसे अभी देखो मतलब डेटा मार्ट्स इज कंप्लीटली सब्जेक्ट ओरिएंटेड. यहाँ पे डेटा आपका पूरा करेक्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा. सो आप यहीं पे आके क्वेरी करोगे. लेक्स इज अ कॉम्बिनेशन. तो देखो मैंने इसका पोजीशन फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया, तो आपके लेक्स में से डेटा यहाँ पे फ्लो होने वाला है इस पोजीशन पे. सो लेक विल बी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए डाटा लेक में क्या होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होता है वो. वहां पे पूरा का पूरा क्या होता है, मिक्सचर जैसा होता है. सो डाटा मैप देख रहे हैं कि वो सब्जेक्ट रिलेटेड है. तो इसमें क्या डाटा मैट लाइक मतलब कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा. तो उसके बीच में कुछ प्रोसेस होता है कि जैसे डाटा लेक हो गया और डाटा मैट हो गया, वही वाला मैं. अच्छा, तो आप पूछ रहे हो इनमें कुछ लिंकिंग, ऐसा बोल रहे हो ना आप, है ना? ये क्वेश्चन आपका. हाँ, तो मतलब देखो सेग्रीगेट करने के लिए भी प्रोसेस होता है, जैसे डाटा लेक से डाटा मैट तक आता है, तो वो वहां पे भी सेग्रीगेट होने के लिए प्रोसेस रहेगा ना कि वहां पे भी. करेक्ट. आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नाउ करेक्टली. हाँ, तो देखो फिर अभी हमारे पास में जैसे मैंने इससे पहले बोला था ना कि डेटा वेयर हाउस के ऊपर डेटा लेक्स है ना? तो उसका पार्ट ही है. तो आपके पास डेटा यहाँ पे मिक्स ओकेजन्स पे है, तो वो ओकेजन जाएगा डेटा वेयर हाउस में. अब डेटा वेयर हाउस के उसमें बहुत सारे काम होते हैं, मैनेज करना, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत चीजें चलती है. तो इसलिए यहाँ पे डेटा डिवाइड कर दिया अलग अलग सेक्शन में, और ये डिवीजन आपको डेटा रिट्राइव करने में हेल्प करेगा. सो यहाँ पे भी आप डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हो, बट इट इज लॉट ऑफ एफर्ट. यहाँ पे बहुत एफर्ट्स, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो डायरेक्टली आप क्या करते हो, डेटा वेयर हाउस में डेटा लेके आते हो, थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हो, थोड़ा यहाँ पे बनाते हो, और फिर इसको डिवाइड करते हो एग्जैक्ट फॉर्मेट में उसके. क्लियर? ओके, ठीक है. तो ये आपके स्टेजेस हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्टिंग. अभी ये जो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो आपको जो थर्ड स्टेज है, तो आपका ये जो भी आउटपुट है, हमें जो भी इसका आउटपुट बन के मिलेगा ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुट एनी क्वेरी फ्रॉम दिस थर्ड स्टेज, तो वो डेटा क्या होगा, यहाँ पे लोड होगा. सो व्हाटएवर इज द आउटपुट फॉर योर सेल्स,
that data will be loaded to your reporting structure. इसलिए extraction यहाँ काम करेगा, transformation यहाँ काम करेगा, और loading आपको कहाँ करना है? आपके reporting tools में. अब आप बोलोगे loading मतलब क्या हो रहा है? अरे बाबा, आपने जो भी यहाँ पे काम किया है, क्लीनिंग किया है, अनवांटेड चीजें निकाली है, डुप्लीकेट्स निकाला है, व्हाटएवर थिंग्स आपने रिमूव करके आपने जब सेग्रीगेशन किया है डेटा का, तो डेटा इज गेटिंग सेग्रीगेटेड हियर, राइट? उस डेटा का क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर बन गया. सो दिस इज एक्टिंग एज योर इनपुट. सॉरी, दिस इज, अभी मैं इन सबको अगर कलर देती हूँ, so this entire thing is nothing but your output, और ये output is, it will be working as an input to your reporting tools. Okay, so ये output आपका किसका है? Data warehousing का, and this output you can take it as an input to your reporting tools. So it can be any reporting tools here. I'm just naming it as BI, business intelligence visualization tools. So जो भी tools है, उन सब tools के क्या होगा? इसका output, it will act as an input here. So if I go to my this third section here, see you have your reporting analysis and the mining tools. तो यहाँ पे आप क्या होता है? अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स बना सकते हो, स्टैटिक रिपोर्ट्स, एडॉक रिपोर्ट्स. आई वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल्स हियर नाउ. बहुत रिपोर्ट्स, ऑपरेशनल रिपोर्ट होते हैं, स्टैटिक रिपोर्ट होते हैं, फंक्शनल रिपोर्ट होते हैं. सो मेनली ये जो आउटपुट है, इट विल बी वर्किंग हियर एज अ इनपुट टू योर रिपोर्टिंग टूल्स, एंड इट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंटेशन लेयर. इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन. दैट इज व्हाई योर लोड विल बी वर्किंग हियर. ओके, सो लेट्स से इफ आई एम नेमिंग इट हियर, अगर मैंने नेम दे ही दिया है, रिपोर्टिंग, नॉट ओनली रिपोर्टिंग टूल, यू कैन टेक दिस डेटा टू any other platform also, wherever you want to take it, because the data is structured now. Okay, click view, click sense, same thing. अगर मैंने suppose what we say traditional tools की भी बात की, for example Cognos, you can take this data there also. MicroStrategy, you can take it there also. Then I have my business objects, again the data can be pulled up here. So this diagram is clear till here? Any doubts, anybody? Okay, now who is the way I was saying ki data warehouse has lots of work, so we have a data warehouse manager. Matlab you cannot see it anywhere, but data warehouse manager is the one who will be managing everything. Matlab kitne transactions ho rahe hain, how many people are coming and using your databases, kaun se databases pe ya kaun se schema pe data zyada fire ho raha hai, something like that. So data manager is the one who will be managing your entire structure here. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? He will be managing here. Now in this platform you have somebody named as query manager or query processing, है ना? तो query processing will be handled, I mean these kind of works are allocated, and then you can see this data. Okay, so query processing किसके पास से आ रहा है? Users के पास से. So user will be coming and querying to this particular section. Who is handling this? Your data warehouse manager. Let me just color it maybe into some other. Okay, I'm making it this bold. Same thing here. Format painter. Okay, okay, okay. So this all this chaining जो भी आपका पे हो रहा है, वो कौन करने वाला है? आपका query processing manager here. You have a data warehouse manager here, and this is just your load manager. I mean, rather saying load. Yes, you're trying to load this data. Load manager. Okay, because जो data आपके database में है, अलग-अलग what we say operational system, external system, it will be coming from here to this. So that is why all of this together are like working as your space between your data warehouse and communication. So अभी ये आपका entire हो गया है data warehouse कैसे काम करता है. अब इसको चलाने के लिए कौन है? चलाने के लिए कौन है? SQL. So now your SQL will be coming into picture here. So SQL is one of the important language, important framework which will be driving all of this together. ठीक है? Clear till here? Now shall we move ahead? Any doubts here? कैसे डेटा अंदर आता है, कौन क्या काम करता है? Okay, okay. Now let's go to the Ma'am, between the three stages, our work is stage 2, right? Our work is concentrated in stage 2. Yes, yes. हमारा एक्चुअली भी देखो, अगर आप लोग फ्रेशर्स हो तो कैसे ना, अच्छा ठीक है, ये डेटा वेयरहाउस पूरा बनाने में वी हैव अ डेडिकेटेड डेटाबेस एडमिन. वी एज अ डेवलपर वोंट बी वर्किंग है. हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम यहाँ पे है,
और यहाँ पे है ना, हम लोग डेटा लेके नहीं आते, हमारे कंपनी डेटा लेके आएंगे, वी एक्चुअली हैव डेटा बेस एडमिन, इफ यू गो एंड सर्च फॉर जॉब्स ना, यू आर वर्किंग एज अ टैबलू डेवलपर, क्लिक व्यू डेवलपर, है ना, तो आपका काम क्या है, दिस इज योर वर्क, प्रेजेंटेशन लेयर पे आप काम कर रहे हो, बट योर वर्क इज ऑल्सो एट द सेकेंड स्टेज, बिकॉज जब तक आपको पता ही नहीं कि डेटा कौन से फाइल से आ रहा है, कौन से कॉलम में कौन सा डेटा स्टोर किया है, हाउ विल यू क्रिएट अ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट, अगर आपने, आप सबको पता है हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट, हाउ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट, एवरीबडी नोज दैट, but to create a pie chart or a line chart you need two things, rows and columns, जैसे डिमेंशंस और मेजर्स आपको लगेंगे ना एक चार्ट बनाने के लिए, तो वो डिमेंशन मेजर्स कहाँ पे स्टोर है, वो स्टोरिंग करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड विच टेबल इज होल्डिंग व्हाट डेटा, दैट इज व्हाई इन आईटी वर्ल्ड इट इज ऑलवेज मेंशन की डैशबोर्डिंग विल जस्ट कम बाय प्रैक्टिसिंग, बट डेटा एनालिसिस, डेटा का जो वर्क होता है दैट इज विल बी कमिंग टू यू बाय हाउ यू अंडरस्टैंड, आपको हर कॉलम पढ़ते आना चाहिए, हर कॉलम में किस लेवल का डेटा है, that you need to know, but being at fresher level for first 2 to 3 years it is not expected out of you, it always goes from 3 years, but जैसे भी एक एग्जांपल है, you are creating a bike, है ना, आपने अपने बाइक को आपने क्या किया, एक बाइक बनाया, यू आर लाइक फॉर एग्जांपल यामा का आपने बाइक बनाया, तो आप पहले क्या करते हो, अलग अलग स्क्वायर पार्ट्स को ज्वाइन करोगे, यू विल हैव 2 टायर्स, यू विल हैव द इंजन, यू विल हैव द पेट्रोल टैंक, समथिंग लाइक दैट. Now people are coming and you have launched that bike in the market. Now people are coming and doing a test drive. So before people do a test drive for your particular vehicle, it is your duty to test whether the engine is working properly or not, whether the brakes are working properly or not, something like that. So same चीज आपके reporting tools में भी होता है, भले ही आपने रिपोर्ट पूरा बना के रख दिया है, you need to test it कि जो client का data है वो correct दिख रहा है या नहीं. So for this testing purpose you need to know SQL and Excel, क्योंकि अगर आपने बना के रख दिया है, how will you test it? You need to do a test drive before you launch anything. इसीलिए आपका SQL में पता होना चाहिए कि डेटा कैसे स्टोर कर रहे हैं, हर कॉलम का मीनिंग क्या है. सो दिस इज अ हाई लेवल इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग, बट ये फ्रेशर लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं होता है, आपको मेनली फ्रंट एंड पे ही काम देते हैं, बट जस्ट बिकॉज टेस्टिंग तो आपको करना ही पड़ेगा जो आपने बनाया है. So it is always good to have the basic knowledge of SQL and the basic knowledge of Excel, है ना. So your work will be at this level, stage number 2, and stage number 3 is mainly you're going to deal. 80% काम आपका यहाँ पे होता है, 20% काम आपका यहाँ पे होता है, because आपको modeling करके मिलेगा ऑफिसेस में. There will be your seniors, your leads who will be making you sit with them. You will be with them. क्लाइंट कॉल्स में आप लोग नहीं जाओगे, यू विल बी देयर एज अ बैक एंड पर्सन, आपको पता है सब चीजें चल रही है, दे विल बी टेकिंग अ इनपुट फ्रॉम यू, बट यू विल बी इन्वॉल्व इनडायरेक्टली, राइट. दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर फ्रेशर लेवल, ठीक है. सो व्हाई वी आर टेकिंग SQL Excel एज अ पार्ट ऑफ पावर BI, बिकॉज इट शुड नॉट बी लाइक कि हमको सिर्फ पावर BI पता है, हमको ये भी नॉलेज है कि डेटा कैसे आता है, डेटा पे वर्क कैसे करते हैं, SQL में हम कौन सी क्वेरीज लिख के डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, और उसी डेटा से हम लोग रिपोर्ट भी बना सकते हैं. So wherever you're going in ahead, future में जहाँ पे भी आप जाते हो, so it आपके लिए blank नहीं होगा, आपको वो पूरा workflow पता रहेगा कि how the data is coming, how we analyze, and how that data goes into your reporting technologies या reporting tools. ठीक है. Any questions anybody have here? Else we can go to second paper. Yes, please go ahead. मैम जैसे हमें क्लाइंट डेटा दे रहा है, तो उस डेटा में हमें क्या एनालाइज करना है, ये हम करेंगे खुद या फिर हमें क्लाइंट बताएंगे? अच्छा, अभी देखो, एनालाइज तो क्लाइंट को कराना है ना. एग्जैक्टली, एनालाइज क्लाइंट को कराना है, बट क्लाइंट का डेटा बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है ना, क्लाइंट ने भी कैसे भी डेटा बना के आपको दे दिए, क्लाइंट को वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट बना के चाहिए. अभी देखो, आई विल टेक यू टू वन ऑफ द रिपोर्ट हियर. ओके, ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन वन ऑफ द फाइल हियर. ओके, दिस फाइल. Okay, this does not have data. So bad. There should be one file. Just opening one file. Why there is no data here? 1 second. Just give me a second. I had few Excels. Okay. देखो, अभी ये एक सैंपल रिपोर्ट है, दिख रहा है आपको जिसने क्वेश्चन पूछा? यस मैम. ठीक है, ये एक पूरा पावर BI का रिपोर्ट है ना. ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, ये है डेटा कॉल सेंटर का.
अब एक कॉल सेंटर पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है, दिन में एक एजेंट कितने कॉल्स ले रहा है ना, और कितने कॉल्स उसने आंसर किए हैं, कितने कॉल्स उसने बोला है कि मैं आपके रिक्वेस्ट में टिकट रेस कर देता हूँ एंड लाइक द राइट पर्सन विल कॉल यू टुमारो। सो ये क्या हो रहा है, हर चीजों का क्या हो रहा है, डेटाबेस में मेंटेन करके रखा है वो कॉल सेंटर वालों ने। अब उनको वो बड़ा पिक्चर देखना है कि ओवरऑल हमारा कॉल सेंटर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल आज के दिन में सपोज 10 एजेंट एक कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, 10 लोगों ने मिलके कितने कॉल्स अटेंड किए और कितने एजेंट्स थे, 8 लोगों ने मिलके 5000 कॉल अटेंड किए, मे बी एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, ठीक है। अभी उसमें से रिजोल्यूशन कॉल कितने हैं और वो कॉल को आंसर करने का स्पीड कितना है, ये सब चीजें ट्रैक होती। अगर आपको भी कभी टाटा स्काई का सपोज फॉर एग्जांपल घर में नेट नहीं आ रहा है, द आई मीन दैट पर्टिकुलर मंथ का आपको वो रिन्यूअल करने का ऑप्शन है, it has gone, so they'll keep on calling you, आपको कॉल कर रहे हैं कि रिन्यू कर लो मैडम, रिन्यू कर लो, समथिंग लाइक दैट, they'll give you schemes। so उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने दिन इतने टाइम में किसने जल्दी से आंसर किया, एंड देन who are the top performing agents who are not performing up to the mark, और कितने लोगों का satisfaction review हमको आया है। ओके सो अभी इन चीजों में क्या हो रहा है, हम डेटा को मेंटेन करके रख रहे हैं हमारे एक फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट आपको सही लगता है वो फॉर्मेट आप पकड़ लो, आपने डेटा को वो फॉर्मेट किया है, ठीक है। अब वो डेटा को जब हम हमारे पास में आता है एज अ डेवलपर, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द कॉलम की कौन से, अभी आपको तो प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर विल ऑलवेज कम विद द प्रॉब्लम कि मुझे जानना है कि कितने एजेंट्स हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हर एजेंट का कितना परफॉर्मेंस हो रहा है। हाँ 10 कॉल तो ले रहा है, वो 10 कॉल में से कितने कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये 10 कॉल में से कितने लोगों को उसने विद इन 30 सेकंड का क्वेरी रिजॉल्व कर दिया, समथिंग लाइक दैट। सो ही हैव दिस प्रॉब्लम एंड वो प्रॉब्लम हमको वो उनके डेटा के फॉर्मेट में देता है। सो वी एनालाइज दैट डेटा, मैं आपको भी डेटा का एग्जांपल भी दिखाती हूँ। तो हम लोग एनालाइज करते हैं, हर कॉलम को समझते हैं। बहुत क्लाइंट से क्या होता है, हमको हर कॉलम का मीनिंग भी आता है। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद लेट्स से बार्कलेज, एक बैंकिंग क्लाइंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में टेबल्स के नाम पढ़ना थोड़ा ट्रिकी होता है, ग्रॉस रेवेन्यू, टेन्यूअर मंथ, ये सब चीजें थोड़ा ट्रिकी होता है। सो हमारा काम क्या होता है, हर कॉलम का अंडरस्टैंडिंग करो और जाके उनको हम लोग मेंशन करते हैं कि ये कॉलम का मीनिंग ये है, कैन यू प्लीज करेक्ट अस वेदर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट or not। तो आपके लेवल पे आप कॉलम समझोगे और क्लाइंट के पास जाके अंडरस्टैंड करोगे वेदर द अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट और नॉट। तो कुछ कंपनीज में ऐसे होता है, कुछ कंपनीज में ऐसे होता है कि सीनियर लेवल ही पूरा कॉलम्स अंडरस्टैंड करके आपको हर टेबल का रिलेशनशिप लाके देंगे, आपको सिर्फ कनेक्शंस बनाना है। आपको मींस डेटा एडमिन्स लोग आपके लिए डेटा में कनेक्शन बना के लाके देंगे, आप सिर्फ रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हो। सो दिस विल वैरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट जनरल प्रैक्टिस यही होता है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू नीड टू अंडरस्टैंड की डेटा का मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि रिपोर्ट बनाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, वो आपको प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानना क्लाइंट का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो रिपोर्ट से ही शुड बी एबल टू टेक हिज डिसीजंस आगे, ठीक है। नाउ दिस इज द कॉल सेंटर डेटा, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल डेटा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे एनालाइज करते हैं। हाँ बोलो मैम, मतलब ये ना जितना से जितना मीनिंगफुल डेटा एक्सपोर्ट करें वो हम क्लाइंट को दें, है ना। हाँ नहीं वापस बोलो, जितना जितना क्या, मतलब डेटा जो क्लाइंट ने हमें दिया है, हमें उसमें से मीनिंगफुल डेटा जितना हो सके अपने अकॉर्डिंग वो एग्जैक्टली, और क्लाइंट को आपको देना पूरा, है। हाँ करेक्ट, और आपको ना 100% मीनिंगफुल नहीं निकलना है। क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर गुड नेम? हाँ ना, हाँ ना, हाँ तो आपको पूरा डेटा एनालाइज नहीं करना। देखो अगर आपको क्लाइंट ने 10 टेबल दिए, देखो अगर आप मेरे एक्सेल पे जाते हो ना, यहाँ पे मैंने ये एक्सेल में क्या किया, 3 ही टेबल्स निकाले। अगर आपको क्लाइंट ने 40 टेबल्स लाके दिए, आप 40 एनालाइज नहीं करोगे, क्लाइंट विल टेल यू 40 है, दे दिए है, बट मुझे इन्फॉर्मेशन इन्हीं चीजों का चाहिए। अभी आपके पास में एंड रिजल्ट क्या है आना, कि मुझे एम्प्लॉय नेम निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो ये आपके रिपोर्ट पे आना चाहिए। तो पहले आप जाके क्या चेक करोगे कि ये डेटा कौन से टेबल्स में, तो आपको कहाँ मिल रहा है, एम्प्लॉय में मिल रहा है, डिटेल्स में मिल रहा है, अकाउंट में मिल रहा है। तो आपके बच्चे में जो 37 है वो यूजलेस हो गए ना, भले ही आपको क्लाइंट दे रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस 37। आप ये तीनों को ही स्टडी करोगे, इसी का अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपके पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्लाइंट का आएगा। जब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं पता, आप डेटा कैसे एनालाइज करोगे। तो पहला चीज, यू विल हैव द डेटा, यू विल हैव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर सपोज आपके पास, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस 11 साल का है, सो आई statements, I get the data in multiple network area, but मुझे डेटा कौन सा फॉलो करना है मुझे ये बोला नहीं जाता है। I need to understand the problem statement sitting with my team, I need to understand the, है ना, और वो कॉलम्स को I'll tell you कि मैं कैसे क्लाइंट को आगे भेजती हूँ। सो देखो ये मेरा एक फैक्ट टेबल है, अभी ये फैक्ट टेबल वगैरह छोड़ दो, विल गो अहेड आगे सेशंस में। तो ये मेरा एक मेन टेबल है,
मैम एक्सक्यूज मी मैम, यस यस बोलिए। मैम आपने जितना ये दिखाया ना इमेज में जो कॉल सेंटर का डाटा, मैम मैं भी बैकएंड प्रोसेसर हूँ, मैं एयरबिन में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा तो हम लोग पेमेंट फ्रॉड सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, राइट? अच्छा। मतलब हाँ पेमेंट फ्रॉड मतलब कि जितना अपने अपने प्लेटफॉर्म में जितना फ्रॉड हो रहा है, तो अच्छा उसका भी क्या होता है कि हम लोग का क्या होता है कि ये जो एक्सेल शीट यहाँ पे जैसे आपके स्क्रीन में है, वैसे ही हम लोग का एक एक्सेल शीट आता है और हम लोग को ये बोला जाता है कि प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि हम लोग वहाँ पे खाली डाटा एंटर कर रहे हैं और बीच में कुछ अच्छा यही है क्या ना? हाँ हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो, डेटा एंटर करते हो तो आपको एक्सेल में क्या ऐसे दिया जाता है? अच्छा हाँ, मतलब कि हम लोग को दिया जाता है कि कौन सा जो हमारे पास जो एजेंट आया है, मतलब कि जो क्लाइंट ये आया है, जो बंदा आया है, उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसने पेमेंट किया था, पेमेंट नहीं पहुंचा है, या फिर पेमेंट बीच में अटक गया है, या फिर वो फ्रॉडस्टर है। तो ऐसा डाटा हम लोग भी एंटर करते हैं। मतलब हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग को डाटा मिलता है, उसको चेक करके हम लोग एंटर करते हैं। अभी मेरे को समझा ना? तो देखो फिर देखो मतलब मल्टीपल चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है ना। तो फिर इसी डेटा को आप अभी एक्सेल लेवल पे कर रहे हो है ना। अभी इसी को सपोज अगर आपको सपोज मे बी आगे लेके जाना है रिपोर्टिंग पे, तो आप चार्ट्स में आप कन्वर्ट करो, तो अल्टीमेटली आप भी डेटा एंट्री का काम करो। मे बी योर वर्क इज मोर हायर, आई शुड नॉट से डेटा एंट्री, बट आप जो भी लेवल का काम करो, एक एनालिसिस करके उसको आप एक प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी अगेन गोइंग बैक टू हर क्वेश्चन जिसने पूछा था, देखो ये मेरे पास में डेटा है क्लाइंट का, है ना, ऐसे फॉर्मेट में आया है। ये फॉर्मेट थोड़ा एक्सेल था, थोड़ा ओरेकल था, ऐसे दो। तो मैंने क्या किया, पूरे टेबल्स को कन्वर्ट कर दिया एक्सेल में, करेक्ट? ये अलग अलग टेबल्स है मेरे पास, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कॉलम, जैसे भी अकाउंट आईडी आ रहा है अकाउंट टेबल में से, है ना। अभी मेरे पास में क्या है, फॉर एग्जांपल पार्टनर, तो पार्टनर में मेरे पास में क्या है, यहाँ पे पार्टनर आईडी है। सो आई एम गेटिंग द पार्टनर आईडी फ्रॉम द पार्टनर्स टेबल। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा है एक लेवल। दिस इज आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। नाउ व्हाट आई डू टू माय क्लाइंट इज, मैं कैसे अपना अंडरस्टैंडिंग उनको दिखाती हूँ। लेट मी सी इफ आई हैव दैट हैंडी विथ मी। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हर कॉलम का मीनिंग समझते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी आईडी मतलब क्या है, एस्टिमेटेड कॉलम्स मतलब क्या है, अकाउंट पार्टनर मतलब कौन है, प्रोडक्ट रेवेन्यू मतलब क्या है, फैक्टर्ड रेवेन्यू क्या है। अब टेक्निकल टर्म हो गया। अब मैंने डेटा एनालाइज किया तो मुझे पता है प्रोडक्ट रेवेन्यू मतलब क्या है, वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू, मतलब उनका टारगेट था कि उन्होंने $35 कमाने चाहिए इस प्रोडक्ट से, बट एक्चुअली उन्होंने कितने कमाए, उसका नाम है फैक्टर्ड प्रोडक्ट रेवेन्यू। समझ रहा है जिसने पूछा है? सो ये क्या हो रहा है, मैं हर कॉलम को जाके एनालाइज कर रही हूँ। सो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन क्या है, प्रोडक्ट रेवेन्यू। प्रोडक्ट रेवेन्यू मतलब ठीक है, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ते हो तो मतलब टोटल आपने कितना पैसा कमाया है उस प्रोडक्ट के बेसिस पे। बट व्हाट इज फैक्टर्ड रेवेन्यू, अगर आप इनका नंबर देखोगे ना, तो हाउ डिड आई एनालाइज, ये नंबर जो है वो ना 10 टाइम्स बड़े हैं। तो मैंने एक एनालाइज किया कि एक है, मतलब एक है मेरा टारगेट रेवेन्यू, इस प्रोडक्ट को मैंने अगर सेल किया फॉर एग्जांपल आईफोन, तो मैंने $1 मिलियन कमाना चाहिए, पकड़ लो 1 मिलियन 1 लाख, बट टारगेटेड कितना था। सो दोनों में से एक कॉलम मेरा टारगेट हो गया, एक मेरा एस्टिमेशन हो गया। समझ में आया? और वो किस दिन पे सेल हुआ था, कितने दिनों में वो कंप्लीट हुआ था वो टारगेट, मतलब किसने रिक्वेस्ट किया था एंड हाउ इट वाज सोल्ड। आर यू क्लियर? समझा? यस सर, यस है ना। सर। अभी मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ, थोड़ा हैंडी नहीं है, उसमें मैंने हर कॉलम का ऐसे बाइफर्केशन देके रखा है कि हर कॉलम का मीनिंग क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मुझे सोचने दो व्हाट वाज दैट कॉलम अबाउट। रिपोर्ट का फाइल, लेट मी थिंक। इट वाज आई थिंक अपॉर्चुनिटी डेटा, एचआर डेटा, टेलीकॉम डेटा। ओके, टेलीकॉम का डेटा था। हाँ ठीक है, मिल गया। मुझे बताइएगा अगर आपको डेटा दिखता है तो, फाइल दिख रहा है तो। ये सुन दिख रहा है। सबको दिख रहा है? ठीक है, अभी देखो, अभी ये देखो एक टेबल है मेरे पास चर्न कस्टमर करके। ठीक है, अभी लेट मी थोड़ा इसको थोड़ा क्लीन करती हूँ। मैम वाइब्रेशन हो रही है। क्या क्या वाइब्रेशन हो रही है, मतलब नहीं साहब, आपका आवाज क्लियर नहीं, बोलो वापस। मैम वो वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रही थी। फाइल दिख रही है ना, क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं क्लियर। ठीक है, देखो अगर दिख रहा है तो इवेंट मैंने, वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है इन बिटवीन। अच्छा वाइब्रेशन का, ओके सॉरी आई वाज गेटिंग अ कॉल। हाँ सो सी अभी क्या हो रहा है, देखो आपको समझ रहा है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये एक टेबल है चर्न कस्टमर चर्न, है ना। अभी उसमें कस्टमर आईडी है, जेंडर है, एज है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। तो देखो हमने कैसे आइडेंटिफाई करके मेंशन किया है क्लाइंट को। कस्टमर आईडी मींस
अ यूनिक आईडी दैट डिफाइंस ईच कस्टमर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, गिरीश कर रहा है, और भी जो लोग कर रहे हैं, हर किसी का आईडी अलग होगा, तो वो क्या हो गया, कस्टमर आईडी। जेंडर मींस द कस्टमर्स जेंडर, मेल फीमेल। तो आप समझ रहे हो हर कॉलम का मैंने कैसे एनालिसिस करके यूजर को समझाया है, बेसिकली क्लाइंट को। दिख रहा है? जैसे अभी ये है, सपोज फॉर एग्जांपल मल्टीपल लाइंस indicates if the customer subscribes to multiple telephones within the company। अब ये यूके का डेटा है, तो यूके में क्या होता है, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, सो दे कीप गिविंग यू कॉल, मैडम द सर्विस इज करेक्ट और नॉट, समथिंग लाइक दैट। तो उनके पास अलग अलग फोन पे भी चलता है, दे हैव लैंडलाइन एंड दे हैव देयर इज वन मोर लाइक एक और उनका फोन मीडिया होता है। सो दैट इज व्हाट द मल्टी लाइन मीडिया टेल्स हियर। तो नाउ यू आर गेटिंग मी। पहले मैंने डेटा समझा, फिर हर डेटा में हर एक कॉलम का क्या मीनिंग है मैंने वो लिस्ट डाउन किया। दिस इज व्हाट हैपेंस एट माय लेवल। आपके लेवल पे आपको इतना डिटेलिंग नहीं देना पड़ता है, बिकॉज देयर विल बी पीपल हेल्पिंग यू। सो आई एम शोइंग यू अ ब्रॉडर पिक्चर। समझ रहे हैं? अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी का, आई मीन उस डेटा में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो रहा है, इंडिकेट द कस्टमर्स करेक्ट, आई मीन मैं कौन से लाइन पे मैं हाईलाइट करती हूँ, आई एम एट दिस लाइन। कॉन्ट्रैक्ट मींस इंडिकेट द कस्टमर्स करंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप। अब मुझे डेटा में जब मैंने सीक्वल चलाया था तो आई गॉट टू नो कि कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के हैं, एक है मंथ टू मंथ, एक है 1 ईयर, एक है 2 ईयर। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स का भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना। अभी कोई ट्रायल पैक यूज करता है, कोई सब्सक्रिप्शन पैक यूज करता है, तो उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो दिस इज हाउ यू गेट इट। आर यू क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. Chalo, then let's move ahead. So where were we? Let me go back to the slides. ओके ये हमने देख लिया था। ये अगेन 2 टायर है आपका। सिमिलरली S1 S2 SC इज नथिंग बट आपके अलग अलग सोर्सेज है। पकड़ लो, ये दोनों आपके कंपनी का सोर्स है। आप जो प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट में बेच रहे हो, आप उसका भी ट्रेंड तो अपने पास रखोगी ना। अगर आपको मार्केट में रहना है, इफ योर कंपनी वांट टू स्टे, यू विल हैव टू सी ना। जैसे अभी लिवाइस का कोई जीन्स निकल रहा है, एक और कंपनी जीन्स निकालती है कम रेट में, सो व्हाट यू आर डूइंग, आप आपका प्रोडक्ट का जो मार्जिन बाहर चल रहा है वो तो देखोगी, साथ में यू आर लुकिंग एंड मेकिंग अ नोट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। तो वो क्या हो गया, ऑपरेशनल प्लस एक्सटर्नल डेटा, वो आपका चला गया ETL में, है ना। अब ETL में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन में आप काम कर रहे हो, और डेटा कहाँ लोड कर रहे हो, आपका जो भी एप्लीकेशन हो, आपका रिपोर्टिंग एप्लीकेशन हो, वेर एवर यू वांट टू टेक द डेटा, आप इस डेटा को भी एक्सेल में भी लेके जा सकते हो। सो आई एम नॉट फिक्सिंग इट टू ओनली योर रिपोर्टिंग टूल्स। आपको जहां भी ये स्ट्रक्चरल डेटा को लेके जाना है, यू कैन गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो फिर आपका ये डेटा वेयर हाउस हो गया, उसमें 3 डेटा मार्ट्स। अब ये 3 क्यों है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का डेटा होगा, सेल्स, फाइनेंस एंड डेटा माइनिंग, है ना। एंड देन यू कैन टेक दिस डेटा अहेड एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। ओके, everybody clear till this concepts? Let's give a 5-minute session. If anybody have any issue, then we can go and start installing a SQL server. और फिर next session से हम लोग देखेंगे कि how can we start working with basic SQL. मैम आपके पीसी में एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एयर ट्रैफिक कस्टमर सेटिस्फेक्शन का फाइल था, उसको थोड़ा दिखाइए ना। वो मैं थोड़ा समझ में रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बताओ कौन सा चाहिए आपको? यही वाला एयरलाइन पैसेंजर सेटिस्फेक्शन। अरे बाप रे, मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है अभी सबको। कल से भी मुझे ना थोड़ा ऐसे निकाल के रखना पड़ेगा डेटा पहले। ठीक है, एनीवेज नो प्रॉब्लम। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको इसमें? बस ये इसके ऊपर, मतलब मैंने भी मेरे कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ वही, तो इसको थोड़ा सा समझाइए ना, बहुत अच्छा लगता है ये वाला काम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सेटिस्फेक्शन फिगर को ये करना। अच्छा, तो एक मिनट, थोड़ा मैं अरेंज कर लेती हूँ। यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ डेटा इन माय सिस्टम, बहुत सारा डेटा दिखेगा ये। अच्छा, तो इसमें अगर किसी को एक्सेल आता है कि थोड़े शॉर्टकट भी मैं बताती हूँ कैसे फिल्टर लगाते हैं। Ctrl+Shift+L दिख रहा है सबको, फिल्टर्स लग गए। तो ऐसे फिल्टर्स लगाते हैं, अलग अलग ऑप्शंस है। दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ कि मतलब नोट डाउन थोड़ा बहुत करते जाओ, है ना। जैसे मैंने भी सब पूरा Ctrl+A कर लिया, तो आई वांटेड टू इंक्रीज द स्पेसेस, है ना। तो मैंने मैन्युअल जाके एक का स्पेस नहीं बढ़ाया, Ctrl+A। और अगर आप फर्स्ट बार पे अगर स्पेसेस बढ़ाते हो ना, देखो ऑटोमेटिकली सब जगह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें ना बस ये इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी किसी ने कोई अलग अलग टाइप के मतलब कस्टमर्स होते हैं, कोई रिटर्निंग फ्लाइट बुक करता है, कोई अराइवल फ्लाइट बुक करता है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो कस्टमर्स का टाइप क्या है, उनका ट्रैवल टाइप क्या है, व्हाट इज बिजनेस है, ट्रैवल पर्सनल है। तो ये डेटा हमने ऐसे सेग्रीगेट करके रखा है। डिस्टेंस कितना है, डिपार्चर कितना है, वेयर इज द अराइवल, है ना, उनके कितने लगेजेस उनके साथ में आ रहे हैं। और देखो ऐसे मेंटेन होता है कौन से लगेज कौन से बोर्डिंग गेट पे जाने वाला है। सो ये सब इसमें इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन पे से हमने उन कस्टमर्स को निकाल के रखा है जो हमारे साथ में रेगुलरली ट्रैवल करते हैं।
तो जैसे भी आपको पता होगा इंडिया में क्या होता है, हमारे मेन फेस्टिवल्स क्या है, होली, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, दीज आर लाइक टॉप मोस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो जो कस्टमर्स हमारे साथ में रेगुलरली ट्रैवल करते हैं ना, दे आर लाइक अ प्रीमियम, they are like a premium customers, so they are like a premium customers, okay। उन कस्टमर्स को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उनको हम मतलब वो ब्राउनी कस्टमर्स बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। और उन कस्टमर्स को हम लोग क्या करते हैं, कूपन देते हैं। ओके, यू आर ट्रैवलिंग विद द एयरलाइंस आफ्टर एवरी मंथ, या फिर रेगुलरली आप हम ही को यूज, हमारा ही ट्रेंड यूज करते हो, हमारा ही फ्लाइट यूज कर सकते हो, तो आप उनको, हम क्या करते हैं, उनको एक वेबसाइट देते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये कंपनी ने ऐसे ही किया था, एक अलग से वेबसाइट बना के रखा है। सो अगर उनको हमारा टिकट्स बुक करना है कम फेयर में तो दे कैन बुक इट, अदरवाइज अगर आपका ट्रैवल है ही नहीं भाई 6 महीने तक, तो फिर उनका तो वो ब्राउनी पॉइंट मिस हो गया ना। सो हमारा एक वेबसाइट है इस क्लाइंट का, बेसिकली वो वेबसाइट्स पे उन्होंने हर पॉइंट के ऊपर कुछ गिफ्ट आइटम्स दे के रखे, गुडी पॉइंट्स। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट गुडी पॉइंट्स टू बुक द न्यू टिकट, वो क्या करता है, वो जाके ऑब्जेक्ट्स परचेस कर लेता है। अभी समझा? तो उसपे से हम लोग वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन निकालते हैं कि भले ही हमने उसको बुकिंग का ऑप्शन दिया था, बट हिज ट्रैवल इज नॉट प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्लाइट से, सो ही कैन स्टिल यूज हिज ब्राउनी पॉइंट टू परचेस समथिंग। ये एक चीजें हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमने और ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स थे, उस पे से हमने निकाल के क्या किया था, एक डैशबोर्ड बनाया था। तो आई थिंक ये मेरा टैब्लू का रिपोर्ट है। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेटा, एक 50% ही डेटा इसके अंदर है। सो हम लोगों को बेसिकली अंडरस्टैंड करना था कि डेटा कैसा है, किस तरह का डेटा है। सो आई थिंक मैंने कुछ ये इसमें ड्राफ्ट बना के वी वर ट्राइंग टू एनालाइज। सो मतलब कितने लोगों का फिर लगेजेस है, तो लगेजेस कौन से गेट पे जाना चाहिए, पता है पहले से पूरा प्री डिफाइन होता है। अब बहुत लोग ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब हाँ हम लोगों ने लगेज डाल दिया तो गेट पे नंबर 2 पे आ गया, या फिर वो जो बैगेज नंबर 1 पे आ गया। इट इज एवरीथिंग प्लान। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो डेटा सब जगह है, द वे ऑफ मेंटेनिंग इज लाइक अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, हाउ डू यू वांट टू मेंटेन इट। तो फिर बाद में वही हम लोगों ने, आई मीन आई डोंट हैव माय रिपोर्ट हियर, मैं आपको रिपोर्ट से थोड़ा और बेटर समझा सकती थी। सो रिपोर्ट में हम लोगों ने फिर लाइक जस्ट डिजाइन किया कि एवरी कस्टमर फॉल इनटू विच कैटेगरी, कौन प्रीमियम कस्टमर है, किसको ज्यादा डिस्काउंट हमें देना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फेस्टिवल्स। जो कस्टमर्स रेगुलर ट्रैवल नहीं कर रहे, जो पहले करते थे, maybe by some reason they are not traveling to us, so we give them a call, say calls they can, we can talk to them like what are the concerns, we can start making a data from them। फिर बहुत customers premium customers है, so we can again like offer them something, कुछ हमको चीजें ऑफर करने से, इसमें लिखा है ना फूड ड्रिंक्स है, so we हम लोग फ्लाइट टिकट्स के अकॉर्डिंग, डोमेस्टिक फ्लाइट है, रेगुलर फ्लाइट्स है, so we give them like this quantity, like half rates में, half discounts में। okay, so this is a high level, still if you want to see this report, I mean कैसे डिजाइन किया था, तो I'll make sure कि next session में I can highlight that। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू आया इसमें से? ओके है ना? हाँ, ओके ओके। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज? No questions? Okay, so shall we go and install SQL Server on everybody's system? Okay, I know it's first day, काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, बट लाइक क्विकली यू कैन गो एंड इंस्टॉल इट। मीनवाइल किसी को कुछ क्वेश्चन है, सो वी कैन टेक देम अप। एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ बोलिए। Are you sending the link of the app? You want me to send the link? Okay, let me search for a link. Yes, give me a second. हाँ, और जिन लोगों ने किया है इंस्टॉलेशन, what version do you have, so that everybody is on the same sync? People who have installed, we need to have, I think, let's go with SQL Server 2019 wala version. What version you have, people who have installed? Madam, 2019 is latest version, ma'am. It's not latest. I mean, usually all, I mean, I'm looking at the IT perspective. 2019 ही चल रहा है काफी टाइम से, तो ऐसे कुछ चेंजेस नहीं होते। 2020 भी किया तो, बट आई एम लाइक कि ठीक है, 2019 भी चलता है, 2020 भी चलता है, लेट्स नॉट गो विद द वेरी लेटेस्ट, बिकॉज वेरी लेटेस्ट में क्या होता है ना, वी नेवर प्रिफर गोइंग इट, इट्स नॉट ओनली विद डेटाबेसेस। अगर आप पावर बीआई की भी बात करो, तो पावर बीआई का एवरी मंथ न्यू वर्जन आते हैं। सो अभी नवंबर में हाल ही में एक वर्जन लॉन्च हुआ है, बट वी ऑलवेज प्रिफर गोइंग 2 वर्जन बैक। तो आप सितंबर अक्टूबर का लेके आए तो भी चलेगा। सो यस, प्लीज शेयर द लिंक। यस, लेट मी सर्च फॉर अ लिंक एंड आई विल शेयर इट टू यू। मैम प्लीज शेयर इन टेलीग्राम, प्लीज शेयर इन टेलीग्राम? आई एम नॉट देयर इन टेलीग्राम, अभी तो आई एम नॉट देयर। सो मैं अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में सेंड कर देती हूँ ना, Chat box, so that it would be easier to download in the PC or laptop, whichever we are using. ये
Okay, I will do it later. हाँ, you do it later on. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रोसेस दिखा देती हूँ. इंटरनेट कनेक्टिव इशू है, जो भी है आप बाद में भी कर सकते हो. Okay, so I already have it installed. So let's see from which platform we can do. Don't go for the latest one, not recommended. थोड़ा older version देखते हैं. So we would be requiring the license copy. License copy? No, do we require the license copy only or? No. आप ये regular वाले पे भी काम कर सकते हो. It is an open source, right? Yes, it's open source. Okay, otherwise what I can do is, already because you have only 15 minutes left, I can give you a proper link and I can give you step by step document. So I think वो better रहेगा सबके लिए, है ना? Because some are saying we will be doing the installation later on. So let me help you with the document. Let me create a small document. यहाँ पे मैं link and I can put you the steps also. Okay? Because अभी net connectivity सबका अलग होगा. कोई phone से connect दिख रहा है मुझे, कोई laptop से दिख रहा है. So let me help you in this way. Okay? Okay, Aishwarya. Thank you. ठीक है. Any questions we have? कुछ है? I know बहुत सारे topics cover किए हमने. People who are completely new, so we can have a question round. Otherwise, we can end the session. I have MySQL Server 8.0. MySQL है तो फिलहाल के लिए I would request you until we have sessions, go ahead with SQL Server. But then very lucky I think you are, आपके पास MySQL भी है, तो आप MySQL के थोड़े बहुत syntaxes ऑनलाइन सर्च करके आप पैरेलली दोनों पे काम कर सकते हो. ठीक है? Ask me in between. Okay, but मुझे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक डिफरेंशिएशन मुझे नहीं हाँ, मालूम MySQL और SQL की क्या I'll है. help you अगर आपको दोनों करना है, but SQL Server तो आपको करना ही पड़ेगा for this training मैं purpose. इसको अनइंस्टॉल करके SQL डाउनलोड कर लेता हूँ. हाँ ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. अगर वो रहा भी तो there is no problem. ठीक है? Are you sending the file of for SQL? I'll have to create it. I'll have to create. I will send it to you in some time. Okay. Along with the reference you would be sending. Okay. And Okay, regarding Power, I will send it to you. I'll send it to you. You are sending in the same file or some other thing. पावर BI अभी नहीं करते, थोड़ा दिन पहले इनिशियली SQL पढ़ लेते, फिर बाद में पावर BI पे मूव करेंगे हम लोग. ठीक है? पावर BI तो I can again send you the document. ठीक है? Yes. Okay, then let's wind it up for today and then let's connect from the next. Okay. Ma'am, document you will provide? Hello. लीव मारे क्या सब? Yeah. चलो. Yeah, you can leave now because the session is ended. Sir, ma'am will provide the documents, right? What means this notepad documents which she is writing? Notepad document with SQL server, how to install the SQL server. How to install it? Yeah, sure. She will provide it. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, you're welcome.